Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul, and it is fantastic to have all of you over here on this beautiful Saturday morning, 15th of July. It's always pleasure to be speaking with all of you. Very warm welcome, Yagnesh, Manoranjan, Ashok, Sujit, Murari, Ajay Kumar. Great to see you also here. Sher, Shalini, great to see you. It's always pleasure to see the mentees attending these webinars. This is an eye-opening webinar which will change the very way you ever see the market. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार है दोस्तों, और ये सेशन जो है ये सेशन चलेगा 1:15 तक। तो आपको ध्यान रखना है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, सो इट्स अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एंड यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर स्टेइंग अलर्ट हियर विथ मी, नो डिस्ट्रैक्शन, नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स। आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। I am in Chennai, by the way. Anyone from Chennai? I'm speaking at IIMs, and that's why you can see me in that attire. And I will be addressing them at IIMs Chennai and Trichy, that importance of technical analysis, how to trade market. So इससे पता चलता है यार कि we are going places, and I want to create job opportunities for every single trader within you, and it is simply amazing. So इसीलिए यहाँ पर मैं लाइव हूँ चेन्नई से, and I will be speaking at IIM. So before moving forward, very quickly about myself, because you might not know me. My name is Ashish Kyal, and the company I found is Ashish Kyal Trading Gurukul Way Strategy Advisors. I worked with Lehman Brothers in 2008, that filed for bankruptcy, and यार Lehman bankrupt हो गया था. I lost my job. Then I started my own firm. I wanted to do trading as a full-time career. I did that, and it worked out fantastic. I have also authored a book. अगर आपने मेरी book देखी होगी या पढ़ी होगी या सुनी होगी उसके बारे में, this is the book which I have published worldwide, available, launched in London in October 2020, then also available in India and US if you are from US. And this is the book I have written. So I've done a lot of things. I'm a chartered market technician, CMT. I cleared all the 3 levels of CMT in just 1 year of time. मतलब 2008 से 2009 में मैंने तीनों लेवल्स क्लियर कर दिए CMT के, and it is simply amazing. So what I am trying to do here is I am trying to make I want to empower traders. My aim is, vision is to empower every single one of you who are here with me. This eye-opening session will change your perception about the markets forever. और आपने मुझे देखा भी होगा CNBC TV18 पे, CNBC आवाज पे, various other shows that you might have seen me, and this is going to be amazing. And people who are there on YouTube, I would highly recommend you join me over here on I'll just share the link across on the Zoom platform, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इंटरेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिंक शेयर की है, यहाँ पर ज्वाइन करिए, एंड देखिए कि कैसे हम यहाँ पर एक पोल ले रहे हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आई वांट टू नो इफ दिस इज योर फर्स्ट वेबिनार विथ AKTG। क्या ये आपका पहला वेबिनार है विथ AKTG? आई वांट टू नो। AKTG इज आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल। तो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये पोल में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर I would like you to join on Zoom, not on the YouTube platform. And volumes, are you able to hear me out? Everyone, I'm very loud, and I want to know if you are able to hear me. And okay, fantastic. So sab log hai loud and clear. I would like to ask you, how is the Josh today? I want to know from every one of you, Akshat, BK, everyone who is there, Sanjeev, Rupesh, so many of you are there. How is the Josh today? The Josh is high. The Josh should always be high. The market शायद ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन जोश कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं, इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। देखेंगे इस वेबिनार में हम कि क्या होता है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, कैसे इसे हमें यूज करना चाहिए, और कैसे हम मार्केट के आने वाले वीक में क्या होगा वो साथ में डिराइव करेंगे। कैसे ट्रेड करना है, कैसे पैसा कमाना है यार, ऑप्शंस में क्या करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में आपको ले चलता हूं। चलिए, लेट मी क्विकली, वेरी क्विकली शेयर अक्रॉस माय PPT. आई एम एंडिंग द पोल राइट नाउ. I can see many of you are also here for the very first time. That is awesome.
एंड यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ मेरा पीपीटी बहुत ही क्विकली, एंड आई एम शेयरिंग इट अक्रॉस, and I am live from Chennai. The reason being, I'm speaking at IIMs and today evening. लेकिन मेरा commitment था आप लोगों के साथ में, so I did not cancel my event. Rather, I'm doing it from Chennai live. So Sumit has read my book. He's saying it is just fantastic. Thank you, Sumit, for that. And चलते हैं आगे, बढ़ते हैं. मेरा पीपीटी दिख पा रहा है आपको? चलिए. वे स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स, जैसे मैंने कहा, एक I have started this as an independent quality research, as a trader, as a mentor. I love trading. I'm passionate trader and I love teaching people. That's my passion and I keep doing that. That's why this webinar. And over here you can clearly see I'm an engineer, and you can see me on various business channels, CNBC Awaaz, Zee Business, ET Now, and all of those places. I've won a lot of game shows, like you can see, and with a huge margin. दोस्तों ऐसा नहीं कि यार ऐसे ही कुछ जीत गए. Look at the margin, 22% return on 1 week without leverage. And look at the stocks which I selected, up by 8%, 4% in just 1-2 days of time. And here also 14% return in 1 week. बहुत बार, if you have seen me, I have won a lot of times. Even on CNBC Awaaz, CNBC TV18, Bullseye, ET Now, these are all the who's who. You can see this was Rakesh Bansal against whom I won. A lot of people were there when Bullseye show hota tha. As I said, I'm today speaking at IIM Trichy. I am also speaking at National Stock Exchange. Last week I was speaking at National Institute of Securities Management by SEBI NISM, and I have written for Economic Times section of Navbharat Times. You can see me with my mentor, Martin Pring, Ralph Akampura, and all of those people. This is the book I talked about. I showed you. It's a fantastic book in case you want to read it. It's being endorsed by Robert Proctor himself of Elliott International, Mr. Ernest P. Chen, Mahalingam from SEBI. And these are all the happy faces from mentorship, Master of Cycles program, and other places. I was also speaking at China Investment Forum. दोस्तों, so चाइना में भी मैंने ये टेक्निक को सिखाया है. तो आप लोग क्यों वेट कर रहे हैं सीखने के लिए? There were 3,000 participants in Bogo Investment Forum, and they selected me as a Hall of Fame for their, the seminar which I conducted there. It was fantastic. चलते हैं आगे. My Twitter handle is @Kyal Ashish. Ensure you are following me on my Twitter handle. And my Telegram is Ashish Kyal Trading Gurukul. तो दोस्तों ये ध्यान रखना, मैंने लिखा हुआ है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट. बहुत सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप से एंश्योर यू आर नॉट ज्वाइनिंग दैट फेक टेलीग्राम जो ओवरनाइट पैसा डबल करने की बात करते हैं. ओवरनाइट डबल नहीं होता है, महीने में हो सकता है. तो बात करेंगे वो भी आगे कैसे ऑप्शंस बाइंग में ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. Very quickly, this is purely from learning and educational perspective, so do not take it anywhere else. चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज के जोश की, और शुरू करते हैं समय के साथ. So let us start beginning with the concept of time cycle. Time cycle, समय बड़ा बलवान है. Okay, time is the most important element that you can ever see in the market, but very less talked about. This is an option chart of 19,000 call option on Nifty. ये डायरेक्टली जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं पिंक कलर की, दिस इज एन ऑप्शन चार्ट डायरेक्टली अप्लाइड ऑन the vertical lines are time cycle. The time cycle is directly applied here because you can clearly see every time prices move toward this level, there is a move on the upside. So every time prices move on this level, there is a move on the upside. कहां से कैसे पता चले? So over here you can see that from here price is rallied up. Price is rallied up. Can you see that? Price is moved sideways and up. यहां से तो सुपर ट्रेंड मिला. अगेन फ्रॉम हियर इट वुड अमेजिंग. सोचो ना यार, 100 रुपीज 150 रुपीज से 600 तक गया था इसका प्राइस. एंड दैट्स हाउ टाइम साइकिल वर्क्स.
सो टाइम साइकिल अप्लाई करने के लिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट टाइम होता क्या है? टाइम साइकिल से पता चलता है कि कहां पर प्राइजेस पॉसिबल है ऊपर जाना, हाउ कैन इट मूव, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वी कम टू नो बाय यूजिंग these vertical lines. These vertical lines, the distance between this vertical line is approximately is 87 candles. So if you count the number of candles, it is 87. So you can see that there is very important thing to understand that every specific time market moves on the upside. Every specific time market ऊपर की ओर जाता है. Now why is that happening? This is the magic of time. Everything is governed by time. So we will come back and revisit this chart in a while. तो हम पहले क्या करेंगे, हम प्राइस एक्शन देखेंगे, भाव भगवान छे और समय बलवान छे. So we will combine price action along with time and we will look at both of those things. So right now we will move forward and look at the aspects of price action and टाइम साइकिल. तो चलते हैं आगे. पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दिस इज द फोरकास्ट ऑफ निफ्टी वीकली काउंट विच वाज डन लॉन्ग बैक. इट वाज डन लॉन्ग बैक इन December 22 कि यार जून 2023 से मार्केट इज गोइंग टू बी ऑन द अपसाइड. सो एंड वहीं से अगर आप देखोगे मार्केट ने रैली कब से शुरू की दोस्तों, आपको पता है? जून के महीने के शुरुआत से मार्केट स्टार्टेड गोइंग अप. आर यू एबल टू सी दैट? आर यू एबल टू सी दैट? इट इज फैंटास्टिक. सो दिस फोरकास्ट वाज डन ऑन अ very clear way कि यार जून is going to be a rocket. Can you see the rocket on the upside that we were expecting it to be done? एंड यहां पर आगे देखते हैं. ये था निफ्टी का चार्ट December 1 को. जब हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे यहाँ पर you can clearly see that the prices were showing on the upside. It will complete wave 5 approximately equal to wave 1, and from there we were expecting it to move on the downside. This was the first time Nifty touched the level of 18,890 levels. This was for the very first time Nifty touched 18,890 levels, and from there we can clearly see prices came on the downside. यहां पर क्या अप्लाई किया गया? Elliott wave count. चलिए ये तो पास्ट का हो गया. आगे का और देखते हैं कि कैसे वर्क किया था. Let us just move forward and see कि क्या हुआ इसके बाद में. इसके बाद में निफ्टी formed head and shoulder topping pattern with a downward target based on wave theory and moved sharply lower. It went to as low as 16,800 and later ये डाउन ट्रेंड के वक्त. अभी आप बोलोगे कि यार डाउन ट्रेंड तो हो गया टाइम, अप ट्रेंड में प्रिडिक्ट कर सकते थे क्या? दिस आई कॉल एज द जीपीएस ऑफ द मार्केट. एंड overall when I say GPS of the market, see, if you want to go from Mumbai to Delhi, you want to possibly have a global positioning system, right? जिससे पता रहे यार कौन सा फास्टेस्ट पाथ है, किस तरीके से जाएंगे, कितने टाइम में पहुंचेंगे, क्या डिस्टेंस है, all of those things. And you will be able to now see that from here the GPS suggested we might be headed towards 19,200 odd levels on the upside. If you look at it from here, we were expecting wave 5 to go on and तभी निफ्टी चल रहा था करीबन 18,600 के आसपास. Nifty continued to inch on the upside in the form of fifth wave. यहां पर आप देख पा रहे हैं फिफ्थ वेव जो चल रहा है. फिफ्थ वेव कंप्लीट होने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं there is going to be a retracement or a correction that can possibly start. तो ये है GPS of the market, and GPS help us to understand from where we expect markets to reverse back on the downside. So this is very important information. और ये होता है दोस्तों, आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, मैं नहीं. इफ यू नो द साइंस. सो एज आई से Elliott wave, time cycle, these concepts are the science. I've worked with hedge funds in US. I know what they look at and this is what they apply, and that's why they have the edge when they are trading. So let's just move forward. I'll come to all of those things later. Let me now move forward.
ये है निफ्टी का चार्ट। यहां पर आप जो राइट हैंड साइड पे देख रहे, दिस इज नोन एज वॉल्यूम प्रोफाइल। As I said, I'm going to give you these tools which will be an eye-opening session. This is an eye-opening session and we will look at options trading also. But पहले basic तो समझे क्या हो रहा है। If you look at it, Nifty was around 17,900 and the volumes were picking up around those levels huge. So आज तक volumes आपने नीचे का देखा होगा, but this is volume at price. इसे volume profile कहते हैं। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स एक्टिविटी एक्चुअली हैपेंड। बिग प्लेयर्स एक्टिविटी जो हम बोलते हैं, वो एक्टिविटी हुई थी इस लेवल पे, विच सजेस्ट दैट द ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कैन रिवर्स ऑन द अपसाइड इफ 17,900 गेट्स ब्रोकन। क्योंकि वहां पर मेजर प्लेयर्स ने स्टॉक्स या इंडेक्स को एक्यूमुलेट किया। If you go and check later on what happened, you can see this activity on the volume profile कि कहां पर हुआ है। So look at that level which was marked months earlier. ये लेवल अभी मार्क नहीं किया है दोस्तों, ये 17,900 का लेवल मार्क किया था मई के महीने में, मई भी नहीं, आई थिंक अप्रैल में, कि 17,900 ब्रेक होगा, यहां से एक रिट्रेसमेंट आएगा, then we will break 7,900 and we will start the upward journey. And ये head and shoulder pattern भी दिख रहा है, देखिए। So this right hand side we call is at a volume profile, and look at this journey of Nifty on the upside. Can you see that? Can you see the overall movement that happened on the upside precisely from that level of 17,600 900 के आसपास से यहां से नीचे आया and Nifty started its upward move. Amazing trend that started. ये जो वॉल्यूम्स है जो राइट में दिख रहा है, this showed that यहां पर accumulation किया बड़े प्लेयर्स ने. This is where the re-accumulation happened. Can you see that? The accumulation here, the re-accumulation here, again a re-accumulation at these. So these are high volume nodes. So मैं जो आपको बात कर रहा हूं अभी, this I am talking from volume profile perspective. Nifty volume profile gives perspective on what big players are actually doing. Okay, and where are they re-accumulating? Re-accumulation का मतलब हुआ वहां पर उन्होंने अपनी positions create किए. So these price action areas become very important. So that's why it is crucial for you to know these things very significantly. Okay, the color represents, this represents 70% of the data and this represents 30% of the data. That's why the difference in the color. But हम इसको कैसे यूज करेंगे? So I know 18,700 के आसपास, because this is where the re-accumulation has happened, the big players have entered here, the are added here, so they will defend that level, which means that Nifty ka major support is going to be at 18,700. Now this might look very far away, agreed. So यही concept को जो 1 hour chart पे हम देख रहे हैं, we will be looking at even on a 15-minute chart, we will be looking at even on a 5-minute chart. ये आप सब पे अप्लाई कर सकते हो. And can you see that? Okay, over here. Now जो वेव काउंट है ये मार्क किया हुआ है ABCDEFG के फॉर्म में. That is neo wave count, which shows that the trend is matured. इसका मतलब ट्रेंड matured है. We can see that, and very clearly we can also say that once the trend reverse, the major support will come around this level of 19,000, 18,700. So that is volume profile दोस्तों. अभी आगे बढ़ते हैं. Let me go and move forward from here, and let us just look at some more concepts of these things. Lunar cycle.
इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़े टाइम में, एंड I will explain you in a very systematic step-by-step fashion. Okay, and let's just move forward for now. And let me now go to the most important way of looking at the trend. Trend is your friend. Okay, do you agree with me? Trend is your friend. तो अगर हमें ट्रेंड देखना है तो कैसे देखना है? जब मैंने सीखना शुरू किया था, ट्रेड करना शुरू किया था, तो द क्वेश्चन दैट कम टू माय माइंड इज दैट यार ट्रेंड देखे कैसे, करे कैसे, एंड समझे कैसे? तो मैं आपको एक 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 मंत्र देने वाला हूं, उसे आपको आग बंद करके यूज करना है. आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी will increase sharply from Monday onwards. Just look at what I'm going to show you now. Okay, so I'm going to share across some very interesting aspects on how to identify and trade using trend. So if you are looking at a chart over here, this is the chart, this is the candle. The overall trend, if it is on the downside, will reverse up once you see the three candlestick confirmation. What is the three candlestick confirmation that is going to reverse the trend on the upside? So we are looking at a simple price action technique. With price action then we'll combine time. तो इस मेथड को हम alone नहीं यूज करेंगे. This method we will combine with price action. So we have this high is above the prior high, the low is above the prior low, and close is above the prior high. क्या तीन कंडीशंस है दोस्तों? The high is above the prior high, the low is above the prior low, and the close is above the prior high. So we have these three conditions, and on these conditions we can say that the overall trend has reversed on the upside. This is a simple Dow theory method. Now if I'm looking at these three conditions, let us look at the past first. ठीक है, यहाँ पर okay, if you check this candle, this is the candle where we can clearly see that the high is above the prior high, low is above the prior low, and close is above the prior high. Many people who learn from Google actually look at it as a bearish candle. अरे bearish candle बना, inverted hammer बना, ये बना, वो बना. No, I say that this is a simple Dow theory concept, price action, which we say as Dow theory. Three conditions क्या है? High is above the prior high, low is above the prior low, and close is also above the prior high. Since we have these three conditions satisfied, we can say that the trend has reversed on the upside. It is very clear. From here, we can then say that overall the trend will continue up unless we see the opposite three conditions. What are the opposite three conditions? We need to have the high below the prior high, low below the prior low, and close below the prior low. If these three conditions reverses down, we can say that the trend has reversed back on the downside. Is it clear? Simple three conditions. Are you able to make out? Every one of you. Everyone. बहुत इजी है दोस्तों. आज तक पता था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, लेकिन आज पता चला कि ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है. यहां पर अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की होती, ओके, अगर यहां पर आपने बाय किया होता बेसिस ऑफ दिस थ्री कंडीशंस, then you might have entered the market around 14,600 levels के आसपास. ठीक है, from here you continue to ride the trend until 17,600. So you were able to ride 3,000 points of move on the upside. 3,000 points move.
एंड इफ यू आर ट्रेडिंग इनटू 4 लॉट्स ऑफ निफ्टी, मतलब 200 क्वांटिटी, 4 लॉट्स मतलब 200 क्वांटिटी निफ्टी का आप फ्यूचर्स में लेते हो, यू आर एबल टू मेक 6 lakhs using this technique. Stop loss prior weekly low ka candle. If you use this technique, you will be able to ride the trend. Now let us try and understand the other method. Currently क्या हो रहा है, ठीक है, करंटली क्या हो रहा है, ध्यान देना. यही चीज मैंने सीएनबीसी पे फ्राइडे को भी बोली थी, थर्सडे को बोली थी, मेरा जब इंटरव्यू था, दैट फॉर 16 वीक्स, 16 हफ्ते हो गए दोस्तों, 16 weeks has happened from this candle. Can I say this is a bullish candle? Guys, I want interaction. I want to know if you are understanding it or not. Can I say this is a bullish candle? Simple rule of 3 candle rule. This is simplest rule that you can ever get in technical analysis. Look at it. So this is the simplest rule, which is saying that the trend has reversed on the upside. Okay, ये कौन सा लेवल था, 17,300. From 17,300 for 16 consecutive week, not a single close below prior candle low. Can you believe that? एक भी क्लोज प्रायर कैंडल लो के नीचे नहीं हुआ है, एक भी क्लोज नहीं हुआ है. फॉर 16 वीक्स निफ्टी इज नाउ एट 19,564. तो अगर समझो आपने 19,500 तक भी राइड किया होता तो 2,200 पॉइंट्स यू आर ऑलरेडी राइडिंग द ट्रेंड. 4 लॉट्स ऑफ निफ्टी मतलब 200 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड करते हो तो यू नो हाउ मच यू कैन एंड अप मेकिंग. स्टिल रनिंग, ये बंद नहीं हुआ है पोजीशन दोस्तों, ये तो अभी चालू है. तो क्वेश्चन इज, व्हेन वी नो द ट्रेंड इज देयर, मेकिंग मनी इज इजियर इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, then why the hell everyone is trying to catch a top? We can say that the trend looks matured. There is possible कि ज्यादा ऊपर जा चुका है, लेकिन टॉप तो नहीं बना है. ये सिंपल कैंडल यूज करके अगर आप ट्रेंड को देखोगे, यू विल बी एबल टू राइड द ट्रेंड ऑल द वे. है ना, सिंपल पावरफुल टेक्निक. सो व्हाट इज द टेक्निक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ? दिस इज price action. Okay, price action using candlestick. बहुत ही सिंपल मेथड है. Candlestick rules to ride the trend until it is bend. Okay, ride the trend until it is bend. मतलब जब तक नहीं हो रहा है. Using this, you will definitely increase your trading accuracy. There is no second thought. So do not miss out on such simple methods. Is it clear, everyone? Overall, use this simple method to ride the trend. ये तो मैं आपको बता रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे. You can apply this on options chart. You can apply this on daily chart, 5-minute chart, 1-hour chart. I am going to show you those charts and you will be shocked to see it work like magic. जो मैं आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, ये कोई सभी लोग देखते हैं चार्ट को, प्राइस चार्ट तो सभी देख रहे हैं, लेकिन इस परसेप्शन से देखना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं. सोचने वाली बात ये है कि आज तक आपने इस चीज को देखा, लेकिन क्या ऐसे देखा इतने सिंपल वे में? भाव भगवान छे, लेकिन भाव को इस तरीके से कहां से देखा? सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टीच यू ऑल, दैट दिस इज अ साइंस. और मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनता है, लेकिन रिस्क भी है. और दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है, कहते हैं ना. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द रिस्क सो यू गेट द रिवॉर्ड. बट साथ ही में ऐसे यूज करेंगे तो कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आएंगे. अभी अगर वीकली ट्रेंड ऊपर का है, डेली ट्रेंड अगर ऊपर का है, आवरली ऊपर का है, तो हम सेल क्यों करना है? मतलब 50% काम हमारा हो जाएगा इफ वी नो द ट्रेंड.
when I was learning, I was simply thinking यार कि यार ट्रेंड सब लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन कैसे हम इस ट्रेंड को कैप्चर करें. सो इस तरीके से अगर कोई एक मेंटर आपको ये बता देता है ना, सिंपल ज्ञान की बात है, इफ समवन टेल्स यू इन सच अ सिंपल वे, यू लाइक वाओ, आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, आई ऑलवेज सॉ द चार्ट बट नेवर एवर सॉ इट इन सच अ सिंपल फैशन. ओके, है ना, फैंटास्टिक. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. लेट्स नॉट स्पेंड टाइम बिकॉज आई वांट टू डिराइव एन ऑप्शन ट्रेड. वीकली चार्ट पे ऑप्शन ट्रेड नहीं, लेकिन हाँ पोजिशनल ट्रेड में ले सकता हूँ, फ्यूचर्स ट्रेड में ले सकता हूँ, ईटीएफ, ये सब भी चीजें मैं कर सकता हूँ. लेकिन ऑप्शंस को ट्रेड लेने के लिए हमें डेली, आवरली या 15 मिनट चार्ट पे जाके देखना होगा. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट I'm going to go on a 15 minutes chart also and daily time frame chart. So I'm going to go on this simple daily time frame chart and I'm going to open up my trading view screen. Meanwhile, can you help me out with one thing? Can you invite your friends, family members, everyone? यार सबको सीखना है ट्रेड करने के लिए. सिखाओ यार, इट्स एन ओशन एंड एवरीवन कैन वर्क. आई एम शेयरिंग अ लिंक विथ यू. मेक देम अटेंड दिस webinar. This is exclusive free webinar, eye opening. Why not spread the knowledge? And people who are watching on YouTube, ensure that you are clicking on that subscribe button, liking it, sharing it across, so that people are aware about it. And the Zoom link I am given to you, so do share it across. Meanwhile एक काम कर रहा हूं मैं, I am opening up my trading view chart. ठीक है, चलते हैं वहां पे. Okay, I can see Narayan Sen has already invited his friends. I can see Darshan has invited. Fantastic. Aman has invited. Awesome. Shilpi has invited across on her WhatsApp group. Thank you, Shilpi, for doing that. It is always wonderful to see people spreading the awareness and knowledge about these methods and how it works. It's very, very easy. So chaliye, I can see Rupesh has invited, Nitin has invited, Jatin, Solbi, Jatin, Sopti, I saw you the other day also. Awesome, Rajkumar, Vibhuti, great, great. Thank you very much for doing all of those things. And चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और मेरा ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में. और यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या लग रहा है मार्केट में और कैसे डेली पे, 1 आवर पे कैसे हमें ट्रेड निकालना चाहिए. सो लेट मी जस्ट गो एंड शेयर इट अक्रॉस ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट. सो यहाँ पर आते हैं, ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम चार्ट. ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों अभी फिलहाल. And I'm glad that you have shared across to so many groups and people who are joining live now with me over here. And यहाँ पर I'm going to zoom in. यहाँ पर अगर आप देखोगे overall, if you're looking at this chart, I'm going to share across something very, very interesting with you all. The trend, when it starts, it goes like magic. I have been bullish on the market from 17,060. Why? Because I will now share my secret. I'm sharing my secret with all of you, trusting you all. This is the candle, and ये कोई rocket science नहीं है. It is very simple. Can I say this is the first candle which is turning bullish with high above prior high, low above prior low, and close above prior high. From this candle, if you check, not a single close with the 3 reversal conditions have actually happened until here. This was candle at around 17,060 levels, and this happened until 18,200. तो सोचने वाली बात क्या है, 17,060 से 18,200 का लेवल, which means approximately 1,140 points का मूव निफ्टी पे आ गया on the daily time frame. Raval Ranjit has invited his friends. Thank you, Raval, for doing that. So on the daily time frame,
you can see 1140 points of move on Nifty has come on the upside. Since trend is your friend, I'm going to ask you a simple question. You will say, sir, to ye to bearish candle hai. So can I say that how this bearish candle can be, why I'm not shorting this bearish candle uh, over here? Because the reason I'm not shorting this bearish candle over here, because the weekly trend is up. Okay, so try and understand one thing. There are multiple trends in the market. Now suppose if you are trading, if you are, I'm giving you an analogy मतलब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं. Suppose if you are standing on a beach, on a seashore, आप एक seashore पे हो, you are along with your friends, enjoying there along with your family, and you are just seeing the ocean. You are seeing the waves. When you are seeing the waves, you see that the bigger wave is coming towards the shore. Okay, the bigger wave is coming towards the shore is what you are seeing, and the smaller wave is going away from the shore. ठीक है, स्मॉलर वेव शोर से दूर जा रही है, बड़ी वेव शोर के पास में आ रही है. नाउ विच वेव विल विन? आई एम आस्किंग यू कि विच वेव इज गोइंग टू विन व्हेन द बिगर वेव्स आर कमिंग टुवर्ड्स द शोर एंड द स्मॉलर इज गोइंग अवे? विच वेव इज गोइंग टू विन? द बिगर वेव, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर है, ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा ट्रेंड है. सिमिलरली व्हेन द वीकली ट्रेंड इज अपसाइड, when the weekly trend is upside and you are trading positionally, ये positional traders के लिए मैं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं. when you are trading positionally, तो आप डेली चार्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे कि सेलिंग? when the weekly trend is up on the daily time frame, will you look for buying or selling opportunity? सिंपल रूल है, सिंपल गणित है. फैंटास्टिक, you will look for buying because weekly trend. तो ये जो बेरिश सिग्नल डेली पे आ रहा है, वो हम कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे? बिकॉज ओवरऑल व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस, यू विल नॉट टेक अ सेल सिग्नल. ओके, यू विल नॉट टेक अ सेल सिग्नल. द रीजन बीइंग दिस एंटायर ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड. और अगर वैसे कॉन्सेप्ट से आप देखोगे and you are going to look at it in a very simple fashion, you will never sell this market unless the weekly trend turns bearish. So every time you get a bullish signal, you buy. Can I say this was a bullish signal at 18,800 levels again? Can I say that? Yes. From here, and look at the rocket, look at the rocket. This is all the way on the upside is what we can see on this until this candle. This is the first candle where we can see that the high is below the prior high, low is below the prior low, and close is below the prior low. This was the first candle, and you are right from here till rocket to Chandrayaan. Okay, it's a proud moment for us, every one of us, that we have been successful in launching another Chandrayaan 3. It's awesome. Similarly, proud moment for us that the market is at the lifetime high like a rocket. And if you look at this, again the trend will turn on the upside if on Monday this candle high is taken off. है ना, simple logic. Shall we go on 1 hour chart now, looking at this concept and apply this? So can I say that this is one of the simplest way? लेकिन हम खाली इसे यूज नहीं करेंगे. We will club this across along with time. प्राइस के साथ टाइम को यूज करना है दोस्तों, बिकॉज एज आई सेड, भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे. प्राइस इज गॉड, टाइम इज शक्ति, पावर, एंड ट्रेडर शुड बी डिसिप्लिन. तो यहां पर अभी हम अगर देखेंगे, इंटरेस्टिंगली, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं एक सवाल आपसे पूछने वाला हूं. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, मतलब यार आप ऑलरेडी ट्रेडर बन चुके हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई शुड से. ट्रेडर तो आप हो ही,
प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन चुके हो? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी पूछने वाला हूं दोस्तों। यहां पर देखना, ध्यान देना क्या क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं। कैन आई से दिस इज अ बेरिश कैंडल? Tell me very fast. Let's make it interactive. I want your energy here. I want it to be interactive. Every single one of you who is here with me on YouTube and Zoom, please answer it. Can I say this is a bearish candle? Fantastic. Next question. Will you short this candle? Will you sell this candle? Will you sell this candle? No, because weekly is up. Fantastic. Can I say the bearish candle का रिवर्सल बुलिश कैंडल होना चाहिए? बुलिश कैंडल क्या होगा? हाई अबाउ प्रायर हाई, लो अबाउ प्रायर लो और क्लोज अबाउ प्रायर हाई। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई यहां पर हुई है कि नहीं हुई है वो देखते हैं। द हाई ऑफ दिस कैंडल इज व्हाट? द हाई ऑफ दिस कैंडल इज 19,567. द क्लोज ऑफ दिस कैंडल, एवरेज क्लोज आई एम टॉकिंग अबाउट, इज 19,564. सो कैन आई से फ्राइडे का कैंडल अभी भी बुलिश टर्न नहीं हुआ है? कैन आई से फ्राइडे का कैंडल अभी भी बुलिश टर्न नहीं हुआ है? व्हाई? बिकॉज दिस क्लोज has still not happened above the prior high, missed by 3 points, which means on Monday, the most important aspect that I have to see is Monday ka closing should be above the high of this candle, which is 19,595. 19,595 का हाई के ऊपर अगर मंडे क्लोज होगा, that will be the sign the rocket is picking up again. Are you with me? Close above 19,595Q because this is the high. This is the high of the candle. इसके ऊपर क्लोज होगा तो रॉकेट विल पिक अप. अगर हम डेली तक वेट नहीं करना यार, 3:15 तक कौन रुकेगा? सुबह क्या करें? 1 hour कैंडल. We will look at 1 hour candle. If 1 hour candle closes above 19,595, start buying with an assumption कि शायद डेली क्लोज हो जाएगा तो हम ट्रेंड मिस ना करें. Fear of missing out ना आए. We don't want to have FOMO. We want to enter. So what we want to do is we will enter if Monday morning 10:15 को 19,595 के ऊपर क्लोज हुआ तो. सिंपल स्ट्रेटेजी है. स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आई विल बाय अ कॉल ऑप्शन. इफ दैट हैपेंस, व्हाट विल बी माय स्टॉप लॉस? आई विल कम टू एन आवरली चार्ट नाउ. चले आवरली चार्ट पे. सो बिफोर आई मूव ऑन टू द आवरली चार्ट, आई वांट टू आस्क यू ऑल वन सिंपल क्वेश्चन. हाउ इज द सेशन सो फार? आई एम आस्किंग यू ऑल, हाउ इज द सेशन सो फार? Awesome, great, every one of you, superb, simple way है, fantastic, fantabulous, bullish. The session is bullish नहीं, देखेंगे आगे क्या होता है. Great, must, एकदम okay. मतलब आज तक ऐसा सिंपल वे से मार्केट हमने नहीं देखा था यार. एंड awesome, excellent, मजा आ गया. चंद्रयान, that is fantastic. Comment Chandrayaan, right? Eye opening. I said this is an eye opening session. These 2 hours will change the very way you can ever see the markets. You can ever see the markets. I'm now going to come on the magical. Exactly, this is the magic. 1 hour awesome, super से भी ऊपर, lovely. Chandrayaan 4, superb. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवरली चार्ट पे. आप चौक जाओगे. What I am going to show you now on 1 hour chart, you will be shocked to see this concept on 1 hour from this candle. When the daily turned positive, 1 hour candle, if you check all the way, this was a minor dip, but ठीक है, आपने यहाँ exit किया. Again the trend started all the way until this candle. If you are looking at this, until this candle, you riding the trend. Simple, सूक्ष्म वे से अगर आप देखोगे मार्केट को, in a very easy fashion, you ride the trend from 19,000 all the way 400 points on upside. 400 points on upside multiplied by 4 lots अगर आप ट्रेड कर रहे हो.
तो पैसा बनता है। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? प्रीवियस कैंडल का लो -20 पॉइंट्स, प्रीवियस कैंडल से 20 पॉइंट्स का लीवे देके स्टॉप लॉस लगाना है हमें। अगर हम अभी के कैंडल पे आते हैं, फ्राइडे के, इफ यू लुक एट दिस कैंडल, कैन आई से दिस इज अ बुलिश कैंडल? एवरी वन ऑफ यू, कैन आई से दिस इज अ बुलिश कैंडल? If this is a bullish candle or a bearish candle, I'm asking you. Now यहां पर कॉन्फ्लिक्ट आया, यार मैंने तो बहुत सालों से यही पढ़ा था, ये तो रेड कैंडल है, रेड कैंडल का कलर मतलब बेरिश, लेकिन यहां तो सीखने मिल रहा है ये बुलिश कैंडल है, ऐसे कैसे हो गया? ना वही तो है। इफ यू वांट टू मेक मनी, so do things that majority of the people are not seeing. Everyone is seeing this as a bearish candle. I am telling you this is a bullish candle, and I am giving you the reason. What is the reason? High above prior high, low above prior low, close above prior high. Simple reason hai. And look at the trend from this level of 19,450. Not a single hourly candle, not a single hourly candle has closed below prior candle low. In fact, मैंने ये ट्वीट भी किया था कि यार सुबह से एक भी कैंडल प्रायर आवर के नीचे बंद नहीं हुआ है। सो होने के बाद नहीं बता रहा मैं, होने के पहले मार्केट जब चालू था उसके बीच में, इफ यू आर फॉलोइंग माय ट्विटर, आई विल शो माय ट्विटर हैंडल आल्सो, इफ यू आर फॉलोइंग माय ट्विटर, you knew this is bullish right now because not a single candle is closing below the prior candle low, and the rocket picked up at 3 o'clock exactly. अभी ये तो हो गया 1 आवर पे, चले 15 मिनट्स पे। As I said, you can apply this concept across the time frame, and at times if you see in the past, you will see the trend comes so strong कि 15 मिनट का कैंडल से भी क्लोज नीचे नहीं होता है। This is for all the way on the upside. This is for scalpers, intraday traders, option traders. तो करना क्या है? आवरली ट्रेंड बुलिश हो गया यहां पर, तो हमें यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। वी विल एंटर लुकिंग एट बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल का लो -20 पॉइंट्स इन ऑप्शन। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल बाय कॉल ऑप्शंस, 19400 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे का लगाएंगे, एंड वी विल कंटिन्यू टू राइड until we see a close below prior candle low on the 15 minutes also. So I'm going to zoom in this chart and you will be shocked what you are going to see now. यार मार्केट ये साइंस को फॉलो करता कैसे है? सोचता हूं मैं भी कभी कभी, यार ये साइंस कैसे चलता है इतना एक्यूरेटली? मतलब किसने बनाया ऐसा कुछ कि ये कैंडल को फॉलो करता है? देखो यहां पर, इफ आई टेल यू, कैन आई से फ्रॉम हियर this is the bullish candle. From here we can see the 3 conditions has to be satisfied, not a single close. This is having high above the prior high, so this candle does not change the trend, क्योंकि high below prior high चाहिए था, इसका high prior high के ऊपर है। from here देखना दोस्तों, देखते रहना, यहां पर इतना बड़ा कैंडल का वीक बना, लेकिन वाव वाव, दिस इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं नहीं कह रहा, आप खुद जाके बाद में, वेबिनार के बाद में जाके ये चार्ट ओपन करना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और खुद से चेक करना। मैं नहीं कह रहा कि मैं दिखा रहा हूं इसलिए ये फॉलो करो, खुद से जाके देखना। यहां पर देखो all the way on the downside, यहां देखो all the way from this level 19,460 से लेके 19,580 तक, wow, 120 points on Nifty and it is not reversed. सोचने वाली बात है। विभूति is here, he's saying I caught this trend yesterday after your teaching. Awesome man, this is amazing, right? This is the magic of time, the magic of price is what I am telling you right now. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये मैजिक देख लिया होगा तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। जिन्होंने फ्राइडे को मार्केट को सेल किया था वो सोचेंगे यार ये क्या किया मैंने, खाली ये अगर फॉलो किया होता, या ये मुझे शायद साल भर पहले पता हो जाता या 10 दिन पहले पता हो जाता, तो यार बात ही कुछ और होती। जो हो गया, जो बीत गया वो जा चुका है दोस्तों।
वो मर चुका है, हमें आज में जीना है, देखते आने वाले कल में क्या आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं। Is it clear? Every one of you. So you need to implement this in coming tomorrow. Forget what happened in the past. Now I am with you. I will make you a profitable trader. That's my mission. If you make money, you are helping me to accomplish my mission of becoming a profitable trader. That's what a mentor needs always, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. I am not going to leave you unless you understand it clearly with a very simple aspect. Now I am going to move on to the concept of time. मैं अभी इसे आप फॉरेक्स पे अप्लाई कर सकते हो, आप क्रूड ऑयल पे, बैंक निफ्टी पे, यू कैन अप्लाई इट ऑन गोल्ड, यू कैन अप्लाई इट ऑन फिन निफ्टी, यू कैन अप्लाई इट ऑन एवरी कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, सब जगह पे आप डायरेक्टली ऑप्शंस चार्ट पे भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो. ओके, इज इट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड शो यू समथिंग फिनोमिनल. वी विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ टाइम. टाइम पे एंटर करने के पहले मैं आपको एक रिसर्च दिखाना चाहता हूं which was published by me in the month of July 2013. क्या मार्केट को फोरकास्ट करना पॉसिबल है? लोग बोलते मार्केट को फोरकास्ट नहीं कर सकते. यहां पे एक प्रूफ देना चाहता हूं मैं, कैसे आप मार्केट को फोरकास्ट मतलब आगे कौन से लेवल तक जाएगा, कौन से टाइम पे जाएगा. Okay, I'm going to show that now, that until what level, what time markets can move using this simple aspect of research. Now, this research was published by me to the monthly research, which was on 25th of July 2013. This was published in 2013. Then we will move from here to the concept of time. This research, what was so special about this research? This research talked about Sensex ka chart, that Sensex will touch the level of 61,000. 61,000 ka level Sensex will touch by when? Sensex will touch the level of 61,000, which is mentioned here and also given later. I will show you the write-up by 2020 or 2021. मतलब 7 से 8 साल बाद सेंसेक्स का लेवल आप 61,000 का देख पाओगे. That was mentioned there. Now, if you're looking at this, what studies are applied here? Sensex at that point of time was quoting just around 19,000, 19,000 के इधर था. And at that point of time, the vertical lines that you see are time cycles. Okay, and the counts that you see is Elliott wave. Together, this combination, I call it as the GPS of the market, which shows you the future. It tells you what's going to happen in the future. सेंसेक्स ने ऐसा किया क्या? 18,000 के क्या 61,000 तक गया सेंसेक्स? लेट्स जस्ट सी दैट. व्हाट वाज रिटन हियर? इट वाज मेंशन्ड इन दिस पीरियड दैट सेंसेक्स कैन टच 61,000 बाय 2020. 272 वीक्स का एक बॉटमिंग साइकिल है, which means that there is a possibility कि 27 वीक्स का डिले हो सकता है. This gives me the date as July 2021. Sensex will be at 61,000 level. कभी publish की थी ये research? This was published in 2013. Forecast कब का था? By 2021 July, Sensex ये level touch करेगा. You know, Sensex touched this level in October 2021. खाली 2-3 महीना पहले मैंने बोला था कि यार जुलाई तक होगा, लेकिन ये अक्टूबर में हो गया. दिस वॉज प्रिडिक्टेड 8 years बिफोर. विथ टाइम, समय के साथ, लेवल के साथ, दोनों चीज को फोरकास्ट किया था. डिस्पाइट ऑफ द कोविड क्रैश विच हैपेंड इन अक्टूबर 2020, मार्च 2020, सेंसेक्स ने ये लेवल को टच किया. सोचने वाली बात है कि नहीं? ये तो खाली सेंसेक्स का मैंने आपको बताया. आई विल शो यू अबाउट बैंक निफ्टी. लोग बोलते बैंक निफ्टी को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, फ्यूचर नहीं देख सकते. मैं बोल रहा हूं आप फ्यूचर देख सकते हो, कोशिश तो करो. बैंक निफ्टी was trading around 12,000 level and the prediction was that bank nifty will touch 40,000 by 2021 and bank nifty from 12-13,000 level touched 40,000. यहां लिखा भी है,
खाली चार्ट पे ही नहीं है, नीचे लिखा है वो रिसर्च में जो जुलाई 2030 में पब्लिश हुई थी। क्या लिखा है कि सिंस बैंक निफ्टी विल बी एट 40,000 लेवल माइट साउंड इरेशनल और क्रेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट हिस्ट्री शोज थिंग्स में रीच। एंड सोचो, बैंक निफ्टी टच 40,000 levels. So what I want to do is I want every one of you to be able to predict the future, and it is possible. Stock market reflects the future and you can predict it if you know these concepts of Elliott wave and time cycle. This is a proof I'm giving it to you all. Unbelievable, right? Believe it, it works. I will also show you something very phenomenal फर्दर कि खाली चलो ये तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, तो लगता है ठीक है ये तो लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म में क्या? लेट मी शेयर अक्रॉस ऑन द शॉर्ट टर्म. आई विल शेयर अक्रॉस माय ट्विटर हैंडल हियर. आर यू एबल टू सी माय ट्विटर हैंडल, एवरी वन ऑफ यू? I'll come to what is going to happen in Nifty just a moment, but पहले तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं. ट्विटर पे लिखा है G इक्वल टू A का जो टारगेट है, हमने मास्टर ऑफ वेव्स में किया था 19,575 का टारगेट हमने डिराइव किया था. आज से कितने टाइम पहले? आज से आई थिंक अराउंड 2 महीने पहले वी हैव डिराइव्ड दिस अक्रॉस दैट निफ्टी विल बी एट द लेवल of 19,575 basis of neo wave. Okay, basis of neo wave, everyone. Okay, and yahan par we can clearly see that this Nifty is now standing. Where is Nifty right now on Friday close, guys? Every one of you, Nifty ka kya close aaya? Can I say the target is achieved now on Friday? 2 महीने पहले का ये जो लेवल है, ये टारगेट अभी अचीव हो चुका है. Isn't it fantastic? So ensure you are following me, everyone, on Twitter, because real time update मैं देता हूं. यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर मैंने लिखा है क्लियरली लिखा है, ये अगर आप देखोगे, नो पॉजिटिव अवरली कैंडल सिंस मॉर्निंग विथ नो क्लोज बिलो प्रायर लो. दिस वाज व्हेन द मार्केट्स वर ऑनगोइंग. Okay, I can see so many of you are following me on Twitter. That is awesome. ये है मेरा वेव स्ट्रेटेजी का वेबसाइट. यहाँ पे एक आर्टिकल सेक्शन है. This article section, if you come here, you will see many articles which will help you to understand what is the overall price trend suggesting, what is happening, everything. So अगर ये देखोगे तो ऑप्शंस चार्ट पे कैसे हम इसे ट्रेड कर सकते हैं. यहाँ ऑप्शंस चार्ट डाला है मैंने, डायरेक्टली ऑप्शंस चार्ट डाला है, और लेवल्स ये जब मार्केट ऑन गोइंग था, इट वर्कड सुपर. सो दिस इज एन ऑप्शंस चार्ट. सो इंश्योर यू आल्सो यूज दिस वेबसाइट wavestrategy.com, एंड यहाँ पे बहुत सारी फ्री रिसर्च है, यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ दोस थिंग्स. तो इंश्योर यू आर फॉलोइंग दैट. नाउ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलो दोस्तों, वापस से मैं चलता हूं आपको टाइम की दुनिया में. लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड ऑफ टाइम, and let me now explain it to you in a simple concept of what is time cycle. Chale aage. Are you ready, every one of you? Are you ready with me to move on to the world of time cycles? And do you want to invite your friends? Here is the link. And people on YouTube, ensure if you are shocked, astonished seeing this, then do ensure to like, share and subscribe to the channel, and also invite across the link I've shared across. Join on the Zoom platform if you want to. Now I'm going to take a very quick poll before I move on further. ये poll मैं आपसे ले रहा हूं. Are you an options trader? And people on YouTube, you can chat with me on the comment or join me on the Zoom. Are you an options trader? Can I say that for the most important thing for options trading is timing, especially if you are options buyer. Do you agree? अगर आपने मार्केट को 1 घंटे पहले टाइम कर लिया होता कि यार 3 बजे मूव आ रहा है, क्या ये मुझे पता चल सकता था 3 बजे के पहले? आई विल शो दैट टू यू कि 3 बजे के पहले ये मूव आते हुए कैसे पता चल सकता था. कैन आई से इफ यू नो दैट, you will be astonished to, and you will be able to time the market to the very day.
You will be able to do that to the very hour. Okay. So options trader है बहुत सारे जन यहाँ पे. आई एम एंडिंग द पोल नाउ. जो लोग नहीं पार्टिसिपेट कर पाए चलेगा. मार्केट किसी लिए रुकता नहीं. यू नीड टू बी फास्ट दोस्तों. यू नीड टू एक्ट फास्ट व्हेन यू वांट टू ट्रेड द मार्केट. नाउ ओवर हियर in this chart I am going to explain you the concept of time. हम चल रहे हैं अभी टाइम साइकिल की दुनिया में. ओवरऑल when we looking at this, J.M. Hurst was an aeronautical engineer. He invented the concept of time cycle. He is known as the father of time cycles. And what I'm teaching you is a scientific approach to the market, which is very well documented. I also documented it in my book. I'm going to talk about time cycle. As I said, I'm in Chennai. I'm speaking at IIMs today evening, and that's why I'm in Chennai. So I'll be talking about this science also in IIMs. Imagine I'm going to do that. I also show you Gann levels. मैं बताऊंगा आप सबको. अभी यहाँ पर देखते हैं. For options trader, time becomes very, very, very important. Over here, yeah, I'm in IIM Chennai right now. I'll be speaking in the evening. I have a session here on technical analysis. Isn't that amazing? I'm spreading the word so that we can create jobs. We can create awareness so that the world knows it works. That's my mission. World should know, yaar, ye science hai. This is not gambling. This is science. That's why I'm speaking at IIMs today. Okay. These back to the cycles. These blue lines, we call it as time cycle. ठीक है. ये blue vertical lines को time cycle कहा जाता है. The difference between this time cycle is 87. यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये difference 89 है. 87 नहीं, 89. It is called as a period. Now J.M. Hurst said that everything repeats itself. Why? See, why this time works? The time cycle works because the overall concept of time is derived out of lunar and solar. So I'll explain you lunar cycle also. Can I say there is 365 days in a year? Keep repeating. There is 24 hours in a day. Keep repeating. There is 12 and a half years of solar cycle. Keeps repeating. There is 28 days of lunar cycle, which keeps repeating. If you think about it, the female body is actually governed by this lunar cycle, because of which we exist on this planet. Only because they are following the period of 28 days of cycle, we are existing on this planet. Do you agree with me? Because of this time cycle, अगर ये 28 day period नहीं follow करते थे तो हम born ही नहीं होते थे. Which means something definitely is influencing us. Can I also say that the lunar or the moon, lunar matlab moon, results into high tide and low tide on Purnima and Amavasya? Because the moon has gravitational force which lifts up the 70% of water on the planet on the upside. सोचो, मतलब मून में, लूनार में इतनी ताकत है कि पूरे धरती का पानी ऊपर खींचता है, इसलिए तो वेव्स बनती है. If that is the case, can I also say that human body is also made up of more than 70% of water? Don't you think that this lunar cycle is going to impact our social mood, our emotions, our way of looking at things, our perception? And that is the reason why the stock market is also getting impacted, because ultimately it is the social mood or the sentiment which is driving the market. And if you think about it, on some occasions you feel excited, on some occasions you feel down, on some occasions you feel blissed out, some occasion you feel ecstatic. Why this fluctuation happens within you? It happens because of lot of things that we are not conscious about, and lunar is one such thing. Now I'm a science student. I never believed into such things, and I said, yaar, ये सब क्या है, ये सब में मैं विश्वास नहीं करता. But then I was shocked to see something
such a phenomenal way of the market, which I'm going to show you now. So I'm going to go on the trading view and I'm going to show you a lunar cycle. We are entering into the world of lunar cycle, and without lunar, time can't exist. Without time, trend cannot exist. So time ट्रेंड साथ में चलता है दोस्तों. टाइम को कैसे देखना है मैं आपको अभी बताऊंगा, ये लूनार साइकिल के बेसिस पे. इट इज रिटन एवरीवेयर. हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, अगर आप देखेंगे, पंचांग देखेंगे, ये लूनार कैलेंडर है, लेकिन हमने वो छोड़ के वी आर फॉलोइंग ऑल दी अदर कैलेंडर्स, बट वी आर नॉट फॉलोइंग आवर ओन लूनार कैलेंडर विच इज ड्राइविंग एवरीथिंग. सो कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नहीं कोई देखता है, पता नहीं क्यों. यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसे कहते हैं मून फेज. मून फेज कहा जाता है यहाँ पे, और ये मून फेजेस अगर आप प्लॉट करोगे तो ये लूनार साइकिल यहाँ पर प्लॉट होके आ जाता है. यहां पर अगर आप देखेंगे द बॉटम साइकिल, दिस बॉटम साइकिल इज पूर्णिमा. ठीक है, आर यू एबल टू सी दिस? दिस इज पूर्णिमा. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपरली. ये पूर्णिमा है, and this is also known as a full moon. Okay, this is amavasya. ये है अमावास्या, or we can also see it as a no moon. Now we are going to look at this and understand in this entire market what has happened. If you are looking at the trend from here, we want to understand relationship of lunar with stock market. In this trend, in this upward trend, okay, in this upward trend, if this is the Purnima, market rallied. Amavasya, red candle, market rallied. Purnima, pause, market rallied. Amavasya, market rallied. Purnima, market rallied. यहां पर अमावास्या पे पॉज हुआ था, बट मार्केट 2 से 3 दिन तक रैली करता है यूजुअली. यहां पे एक पॉज हुआ था, ये ध्यान रखना. This is for the first time Amavasya resulted into the pause of the uptrend. Purnima, market continued to rally, which means that every Purnima and Amavasya in this uptrend, every single time market has rallied. Now the Amavasya is coming on Monday, Tuesday, क्योंकि दोनों के बीच में है, तो हम कह सकते हैं कि 1% मून है मंडे को, तो ट्यूसडे इज व्हाट आई एम गोइंग टू look at as an amavasya. So Tuesday for me is going to be an amavasya, and it is going to be which date? 18th of July. So 18th of July पे मार्केट कहां क्लोज होगा वो इंपॉर्टेंट है. If 18th of July, Tuesday को, okay, Tuesday 18th of July is amavasya. In this entire up move, both Purnima and Amavasya has continued the trend. So if Amavasya is happening on 17th, 18th ले लीजिए, if on any of these days, 17th या 18th July को, if any of these days market does not go up and closes below the low, and closes below the low, 17th July, which is Monday, so मेरे ऐप पे 18th जुलाई आ रहा है, आपके पास पंचांग में अगर 17th जुलाई, सो विल टेक इट एज अ 17th जुलाई देन, क्योंकि आई हैव एन ऐप व्हिच इज शोइंग इज एट 18th जुलाई. सो 18th जुलाई 001 AM. ओके, सो 17th 18th, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग 17th 18th के बीच में है, तो वी कैन अज्यूम कि कभी होगा. सो अगर निफ्टी इस डे पे यहां के कैंडल के लो के नीचे बंद होके बेरिश कैंडल बनाता है, so can I say this is time of concern? Why? Because now the cycle of lunar is changing. This happened first time in October 2021. October 2021 में क्या साइकिल चल रहा था मैं आपको बताता हूं. पूर्णिमा पे रैली, अमावस्या पे फॉल, पूर्णिमा पे रैली, अमावस्या पे फॉल. पहली बार ऐसा हुआ अक्टूबर 2021 को कि पूर्णिमा पे फॉल आया और अमावस्या पे रैली, which showed that the market relationship with lunar changed. That resulted into a confirmation कि मार्केट का टॉप बन गया.
So many of you who are here catching a top of the market, lunar cycle can help you to catch top of the market. If the prices close below prior day low on Monday, it will indicate top is formed. Why basis of moon? Why basis of moon? Because in this entire cycle, lunar has been the cycle which is responsible for change of trend. So I mean to say that ये कैंडल का लो कौन सा है? चलिए देखते हैं. I am not catching a top here. I am saying that if Nifty closes below 19,433, if Nifty closes below 19,433 के नीचे अगर निफ्टी मंडे को बंद होता है, सेल, कीपिंग दिस हाई एज अ स्टॉप लॉस. क्या ये 100% श्योर शॉट है? नो, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग द साइकिल इज रिवर्सिंग. विप्सा होता है कभी कभी, दैट्स व्हाई. सो व्हेन वी विल सेल, व्हेन वी विल कैच अ टॉप, once if we see close below 19,433. so भाव भगवान छे, समय बलवान छे, तो प्राइस इज गॉड. तो प्राइस कंफर्मेशन इसके नीचे होगा डेली कैंडल का. टाइम इज राइट कि लूनार साइकिल, यार इस टाइम अमावस्या पे फॉल आ गया. हर टाइम तो राइज आ रहा था, इस टाइम अमावस्या पे फॉल कैसे आ गया? सो टाइम चेंज हो रहा. अगर फॉल आया तो प्लीज अंडरस्टैंड मी कंप्लीटली एंड करेक्टली, अदरवाइज यू विल डू रॉन्ग थिंग्स. प्राइस एंड टाइम बोथ टुगेदर, दोनों का मैरिज करना है, दोनों को साथ में देखना है, भाव और समय. इज इट क्लियर? ओनली इफ बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर राइट यू विल बी ट्रेडिंग इन द मार्केट. है ना सिंपल साइंस. हमने मून को कंबाइन कर दिया प्राइस एक्शन के साथ. भाव भगवान छे, समय बलवान छे. तो अभी हम वीकली को इग्नोर कर रहे हैं. क्यों वीकली को इग्नोर कर रहे हैं? बिकॉज लूनार साइकिल कैन चेंज द ट्रेंड. बिकॉज नाउ आई हैव टाइम. सो अगर समय साथ में होता है ना, डर नहीं लगता है. फियरलेस बोलते हैं ना यार, अगर समय सही है आपका तो पत्थर भी सोना बन जाता है ना कहावत. इफ द टाइम इज राइट, इवन अ स्टोन कैन बी टर्न्ड इनटू अ गोल्ड. अगर समय सही है तो वही चीज मैं देख रहा हूं कि अगर टाइम के बेसिस पे मैं ट्रेड कर रहा हूं तो वीकली ट्रेंड की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है मुझे. ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों. ये तो मैंने खाली आपको एक उदाहरण बताया. क्लियर है एकदम? एंड एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अभी ये लूनार साइकिल देखा हमने, है ना इंटरेस्टिंग. लेट अस जस्ट लुक एट इट very very clearly and then now let's move on to the concept of Hurst time cycle. Okay, कभी देखा था इस तरीके से टाइम को? have you ever looked at lunar in such a lovely way? Okay, such a simple way, such an easy way. New learning, right? मून भी यही है, भाव भी यही है, प्राइस भी यही है, लेकिन दोनों को कनेक्ट किया आज हमने साथ में. है ना इंटरेस्टिंग? चलते हैं आगे बढ़ रहे. इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. आई एम एन इंजीनियर. यार मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने ऑप्शंस में इस तरीके से ट्रेड लेना शुरू किया, वाओ, इट इज अ डिफरेंट लेवल. तो मैं क्या करूंगा मंडे को? मैं कॉल ऑप्शन राइट कर दूंगा. अगर ऐसा हुआ तो 315 को देखूंगा, ऐसा हुआ तो. नहीं तो मैं तो राइड कर रहा हूं ऊपर की ओर. ओके, आर यू विथ मी? चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी ये लूनार साइकिल के बाद में यू कैन अप्लाई इट ऑन स्टॉक्स, एवरीथिंग. आई एम नाउ गोइंग टू शो यू क्लियरली यहां पर कि क्या हो रहा है. ये तो ये अगर आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का साइकिल है विच इज अ पीरियड ऑफ 89. ये 89 कैंडल्स है इसके बीच में. ओके, नाउ हाउ डू यू गेट दिस 89 कैंडल्स ऑन बैंक निफ्टी चार्ट? द 89 का पीरियड डिराइव करने के लिए, एज आई सेड, देयर इज अ साइंस ऑफ इट. सो यू विल बी एबल टू डिराइव द signs of this only after you have known about Hurst time cycle in totality. ठीक है, तो हम यहां पर इसके बीच में 89. so every 89 period if you check, market is
बैंक निफ्टी इज रेलिंग, दैट इज व्हाट वी कैन मेक आउट एवरी 89 पीरियड। ये थोड़ा सा जल्दी बन गया, लेकिन यहीं पे ये टाइम सपोर्ट है, इसे हम कहते हैं टाइम सपोर्ट जोन, वहीं से बाउंस बैक वापस शार्पली हो। सो लेट मी डू वन थिंग, shall I go on the trading view and show you how to plot this time cycle, every one of you? चले टाइम साइकिल कैसे प्लॉट करना है बैंक निफ्टी पे देखें हम साथ में किस तरीके से। ओके, सो लेट मी जस्ट ओपन अप माय चार्ट। मीनवाइल कैन यू इनवाइट अगेन everyone who wants to learn this concept of time, every one of you? ठीक है, are you with me? Are you with me, everyone? I want you to be alert here. I don't want you to fall asleep. I don't want you to be bored. This is going to change your life forever as a trader. Do you want to get bored in this? जब लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होती है यार, उसमें बोर नहीं होता, उसमें तो मजा आता है। ट्रेड करने से क्या हो रहा था मालूम है आज तक? यार ट्रेड किया, नुकसान हो जाएगा तो डर लगता है ना, अगर लॉस हो गया तो पहले ही बहुत लॉस किया, वापस लॉस हो जाएगा तो। ये डर को निकालना है। ये डर अगर निकल जाएगा ना दोस्तों, आई एम टेलिंग यू द वे यू विल ट्रेड विल बी फिनोमिनल। डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे पास में एक मेंटर नहीं है जिसने बताया यार ये चलता है, ये मेथड है, इसे यूज करो। नाउ आई एम गिविंग यू दैट कॉन्फिडेंस, दैट कन्विक्शन, यूज इट, you will become a fearless trader. I'm telling you, and it works. I've been using this technique. I have a resort in Lonavala, Cloud9 के नाम से resort है लोनावाला में। When the lockdown happened, I was there for 8 months. सोचो ना, resort बंद है, इतना बड़ा resort है कि, and there are like, how do you manage it with the lockdown, with no support system? I was trading, I was mentoring, I was enjoying there with my family. I was not worried because I had this science, this knowledge. That's what I am saying. ये knowledge है। लीमन बैंकरप्ट हो गया, that was eye opening for me. I said यार कुछ भी हो सकता है लाइफ में, पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। लीमन बैंकरप्ट हो सकता है, यूएस का बैंक, और लॉ जॉब जा सकता है, तो यार किसका भी कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं आगे दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहा हूं। मीनवाइल बुलाओ सबको, सीखने दो, so that they become fearless. They are not dependent on one source of income but create multiple sources of income by option trading. चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। एंड हियर इज द लिंक। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर, वेयर इज माय ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन गॉन, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। आई एम ओपनिंग इट अप, और ये रहा मेरा चार्ट। अभी इसे ट्रेड कैसे करना है? डर के आगे जीत है, बिल्कुल। ओके, इतना मजा ट्रेडिंग में कभी नहीं आया। चलिए, अभी अगर मैं देखूंगा ये साइकिल के बेसिस पे इसे प्लॉट कैसे करना है, आई एम गिविंग यू अ वेरी क्विक एग्जांपल हाउ टू प्लॉट दिस थिंग। यू नीड टू कम हियर, सिलेक्ट द साइक्लिक लाइंस हियर। साइक्लिक लाइंस सिलेक्ट करने के बाद में आप ये पॉइंट से राइट में कहीं भी ड्रॉप कर दो। ओके, आई एम शोइंग यू ओनली वंस। इसको डबल क्लिक करने के बाद में यहां पर जो कोऑर्डिनेट्स है ना, -11 है। तो -11 के कोऑर्डिनेट से ये 89 का साइकिल है। अभी 89 कैसे आया वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज उसके लिए मुझे आपके साथ टाइम चाहिए, 10-12 घंटे कम से कम चाहिए। लेकिन आप ये 89 को यूज कर सकते हो मंडे से, नो डाउट। तो 89 मैंने ऐड किया तो 78 का कोऑर्डिनेट मुझे यहां मिला। -11 + 89 किया तो 78 मिला। तो ये मेरा साइकिल प्लॉट हो गया, ये टाइम साइकिल प्लॉट हो गया मेरा। नाउ ये टाइम साइकिल प्लॉट होने के बाद में हमें देखना है कि नेक्स्ट साइकिल कब है। ओके, व्हेन इज द नेक्स्ट साइकिल कमिंग इज व्हाट आई वांट टू ऑब्जर्व हियर। इफ यू ऑब्जर्व हियर, दिस इज द डेट which is 18th of July, 1:45. 18th of July, I'm making a note here. 18th of July, 1:45 p.m. Okay, which is a Tuesday. Very interesting. Tuesday को लूनार साइकिल भी है। Tuesday को 18 जुलाई 1:45 p.m. पे साइकिल का लो भी है। साइकिल्स आर यूज्ड टू कैप्चर द लोज, नॉट द टॉप्स। तो अगर आप देखेंगे यहां पर लो है, यहां पर लो है, यहां पे लो है, यहां पे लो है, मतलब यार सुपर्ब चल रहा है।
और अच्छा रैली है। बैंक निफ्टी का रैली यहां से अगर आप देखोगे ना दोस्तों, 43,700 से लेके बैंक निफ्टी का रैली कितना हुआ, 43,700 से लेके बैंक निफ्टी यहां पर टॉप जो बना 45,300 तक के आसपास। वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज 1600 पॉइंट्स रैली ऑन बैंक निफ्टी, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। सो ये यहां पर क्या है, हो सकता है यहां पर हम मंडे को ऊपर जाए, शायद लेट्स सी, एंड देन वी कैन कम डाउन हियर and we break above again. So I'll again repeat what we can expect. There is a possibility. This is how it can behave. So what we have to look at now is 44,600 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए। और यहां पर अगर प्राइसेस आता है, एक तो ये तरीका है जिससे प्राइसेस यहां पर आ सकता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वे इन विच प्राइसेस विल come on the downside. What is the other way? The other way is if Monday we come down, then we rally up, and then we come down again, we will have a classic buying opportunity on this time. So this becomes my superb trade because prices will also break the prior high. So अगर ऐसा हो गया, कौन सा हाई लेवल है ये मैं सिंपल प्राइस एक्शन के साथ आपको बता रहा हूं। ये हाई लेवल जो हमारा है 45,070 के आसपास का लेवल है। सो अगर बैंक निफ्टी 45,100 ब्रेक करता है तो ट्यूसडे को सुपर्ब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 44,600 का स्टॉप लॉस, 45,100 के ऊपर बाय। ये है मेरा ट्रेड सेटअप और ये 18 जुलाई को 1:45 PM के आसपास मुझे देखना है। तो क्या देखना है 18 जुलाई को? ये साइकिल के बेसिस पे मैं बुलिश हूं, लूनार साइकिल पे मैं बेरिश नहीं हूं। मैंने खाली आपको बताया कि लूनार साइकिल पे अगर रिवर्स हो गया तब मैं बेरिश बनूंगा, रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स हुआ नहीं आज तक, पूरे के पूरे 17,000 से निफ्टी फ्रॉम 17,000, not a single time the lunar cycle reversed on downside. So I'm not bearish. I will turn bearish if close is on the daily basis bearish, but otherwise I am looking for buying opportunity on 18th July 1:45 PM Tuesday. Is it clear? 18 जुलाई 1:45 PM को क्यों हम बुलिश बनेंगे और कैसे ऑप्शन में ट्रेड लेंगे? हम ऑप्शन में ट्रेड लेंगे कैसे? हम यहां पर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक काम करेंगे ना, अगर हमें ऊपर राइड करना है तो कॉल बाय करने के बदले पुट ऑप्शन सेल कर सकते हैं। गाइस, ऑप्शन ट्रेडर्स, आर यू ऑप्शन ट्रेडिंग? You should trade options. If you don't know option trading, I'm telling you, you can make that parallel source of income by trading option. It works fantastic. I am trading this, dosto. I'm trading time cycles and options together. Now I'll show you on Nifty. ये हुआ बैंक निफ्टी की बात, ठीक है। अभी निफ्टी पे चले, चार्ट पे एवरीवन, ये समझ में आया ना? अभी मैं चलता हूं निफ्टी के चार्ट पे और निफ्टी पे देखते क्या हो रहा है। So I'm going to go on Nifty now. ये आ गया निफ्टी, अब आएगा मजा। निफ्टी का ये टाइम साइकिल आप देखना, ये पीरियड है 43। ये 43 कैसे आया? एज आई सेड, वो जेएम हर्स्ट की टेक्निक है। वो मेथड मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आई एम शोइंग यू द एप्लीकेशन ऑफ दिस राइट नाउ। Wow, it is simply astonishing. From here, a low up move, low rally, low rally, low rally, low rally। ये थोड़ा सा लेट हो गया रैली, यहां पर नहीं चला, 100% नहीं है दोस्तों, मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया। यहां पे लो रैली, वाओ, दिस वाज सुपर। लास्ट 100 पॉइंट ऑफ मूव दैट यू सॉ एट 3 PM was this cycle। है ना सोचने वाली बात? ये मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, the 100 point move which happened here
at 3 p.m. on Friday was time cycle. सुपर. सोचो, इसलिए मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको पता होता कि यार 3 बजे के पहले बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है मुझे भाव के साथ में, विच मीन्स प्राइस इफ कंफर्म्स, नॉट अ सिंगल अवरली कैंडल क्लोज बिलो प्रायर कैंडल लो प्लस द टाइम साइकिल, कैन आई से यू कैन नाउ ट्रेड सुपर. Guys, are you with me? Everyone, how I am looking at it, not a single hourly candle has closed below the prior candle low on Friday, and now the time is right. हम बोलते हैं ना यार, कहीं भी गृह प्रवेश करने के लिए हम पांचांग देखते हैं या पूछते पंडित जी को, यार क्या समय है, टाइम तो बताओ कौन सा सही टाइम है. तो हम उसी दिन उसी समय पे गृह प्रवेश करते, दिवाली पूजा करते, सारी चीज समय से करते. तो मार्केट में क्यों ना देखे ऑस्पिशियस टाइम क्या है. सो दिस वाज द ऑस्पिशियस टाइम and the prices were right and with the time. So what we are looking at it is price and time confluence using the method of Hurst time cycle, using Hurst time cycle method even on Nifty methods, or you can apply it on Nifty, Bank Nifty, you can apply it on anything and everything. So price and time confluence using Hurst time cycle methods on Nifty, Bank Nifty. चलिए ये तो हो गया, अभी होने क्या वाला है वो देखते हैं. दिस इज 18 जुलाई 12:30. ऐसा क्यों हो रहा है यार, 18 जुलाई को बहुत कुछ है, लूनार साइकिल है, बैंक निफ्टी साइकिल है, 18 जुलाई को 12:30 को निफ्टी का साइकिल है. सो आई एम गोइंग टू मेक अ नोट हियर फॉर यू. 18 जुलाई 12:30 PM मेजर ट्रेंड कुछ आने वाला है ट्यूसडे को. अगर प्राइसेस ने कंफर्म किया, आवरली कैंडल देखना है. ओके, सो यहां पर वाई 18 जुलाई 12:30 PM वी कैन क्लियरली सी इट हियर. कैसे देखना है, इसको सही तरीके से अप्लाई करना जरूरी है फ्रेंड्स, अदरवाइज यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक. व्हाई? बिकॉज if prices are forming, I'm going to ask you a question now. if देखता हूं मैं आपको कितना समझ में आया. ओके, ये 43 पीरियड है, 43 पीरियड है, ये कितना समझ में है मैं आपको देखता हूं. मेरा क्वेश्चन है, आवरली कैंडल बेरिश है, आवरली कैंडल लोअर हाई लोअर लो बन रहा है, आवरली कैंडल इज बेरिश, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मिंग, बट टाइम इज राइट, विल यू बाय? टाइम इज राइट, विल यू बाय? आंसर मी. आवरली कैंडल बेरिश है लेकिन समय सही आ रहा है, नहीं बाय करोगे ना दोस्तों? क्यों बाय करोगे गाइस? स्टार्टिंग में मैंने पूरे वेबिनार का शुरुआत भाव से किया यार. प्राइस इज गॉड, यू डोंट गो अगेंस्ट गॉड. भाव भगवान छे. इफ द आवरली कैंडल इज बुलिश and the price turns and the price comes towards 18 July 12:30, will you not look for buying now? आवरली कैंडल बुलिश है, 15 मिनट चार्ट पे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है. मिला दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, कॉन्फ्लुएंस. अब होता क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, मैं ट्वीट करता हूं 18 जुलाई 12:30 PM मार्केट हैज ऑस्पिशियस टाइम, लोग जाके बाय कर लेते हैं आधी चीज समझ के. प्रॉब्लम यह है कि इफ आवरली इज बुलिश and time is 18 July 12:30, buy. That's the correct combination. So do not blame anyone if you are not applying it correctly. I want you to apply these signs correctly, friends, and that's why I am asking you again and again to follow it religiously. It's simple, it's fascinating, it is amazing, and this works. Options में क्या करेंगे? ऑप्शंस में सोचो, अगर आप इंट्राडे, ये 5 मिनट पे भी अप्लाई होता है, ये स्टॉक्स पे भी अप्लाई होता है. आई हैव सो मेनी टाइम साइकिल्स दैट आई हैव अप्लाइड ऑन स्टॉक्स. रिलायंस का समय भी अप्लाई कर रखा है मैंने. रिलायंस पे इनफैक्ट गैन साइकिल भी अप्लाई कर रखा है. आपको देखना है रिलायंस का गैन, मैं दिखाऊंगा आपको. आज डाला है मैंने पीपीटी पे, बहुत मेहनत की है दोस्तों ये बनाने के लिए पूरा आपके लिए, बिकॉज आई एंजॉय डूइंग दैट. सो if the time is right, now let me show you the setup here. Can I say the time is right? So
in option, can I buy a call option when you are looking at this candle? When you are looking at this candle, can I say I will buy a call option about this candle high? Are you with me? About this candle high, keeping this candle low, minus 20 point as a stop loss, right? And बना पैसा, बना ना? Are you with me, everyone? So ये टाइम से थोड़ा पहले हो गया, but can I buy this candle? Why? Because टाइम पास में था, मतलब when I say 12:30 हो सकता है आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में, उसके आसपास, तो ये थोड़ा सा पहले हुआ, यहां पर बाय करना है, कीपिंग दिस कैंडल लो है, स्टॉप लॉस, अभी गैप बड़ा था तो क्या करें, लेकिन ठीक है। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें देखना है इस चीज को? चले आगे बढ़े, लुक एट इट, इट इज सिंपली फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये 100% नहीं है कि हमेशा चलेगा, जब लॉस कर रहे हो तो थोड़ा लॉस करना है, 20 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 70 पॉइंट, but when you make money, make it big, 100, 200, 300, 400 points, so that even if your accuracy is 60-70%, you will make money. That's the science, that's the secret of trading profitably, but no one follows that secret. When they lose 100 points. When they make money, they make 10 points. This way you will not move forward, you will move backward. I'm again repeating, when people lose, they lose 200 points on Nifty. When they make money, they make 40 points on Nifty. This way you will move backward. What you have to do, when you lose 40 points. When you make 100 points. That way you will move forward. And every time if you keep doing it, even if your accuracy is only 60-70%, you will make money, but with a stop loss. रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे, स्टॉप के साथ ट्रेड कर रहे, समझ के क्या भाव भगवान से, और समय के साथ ट्रेड कर रहे। व्हाट्स द ऑस्पिशियस टाइम? नाउ आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? अभी चलता हूं मैं आगे, आपको एक और चीज दिखाने के लिए टाइम के ऊपर। दिस इज एन 85 वीक साइकिल ऑन निफ्टी। नाउ आई वांट टू आस्क यू अगेन, हाउ इज इट so far? How is it so far? The concept of whatever we did, how is it so far? Eye opening, every one of you? Amazing, excellent, enjoying? I said यार, मेरा commitment है आप लोगों के साथ में, I will change you, I will transform you into a trader. मेरा mission है वो, to create traders. That's why I am there as a mentor for every one of you who wants to learn and trade. This is not gambling, this is a science. I want to make it very clear, this is a science, and that is the reason I am also here in Chennai speaking at IIMs to explain this science. It works. So amazing hai, superb, awesome, thank you very much, excellent, fantastic. बहुत सारे कमेंट है और मैं सब कमेंट नहीं चेक कर पा रहा हूँ because there are thousands of participants here, so please pardon me if I'm not able to answer you or answer your question. चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी ये साइकिल आप देख पा रहे हैं, निफ्टी पे 85 वीक का साइकिल है। दिस इज 85 वीक साइकिल। ये जो लो बना था ना 2008 का, ये 85 वीक के साइकिल के बाद था। यहां से रैली, यहां से रैली, यहां से रैली, यहां पे टॉप था, यहां से रैली, यहां से थोड़ा लो बना, रैली थोड़ा पहले, मतलब ये 2008 में। इफ यू लुक एट इट, if you look at it, it is simply amazing. The low which is formed over here was simply fabulous. After the COVID crash, 24th March ko this low was supposed to form, and it formed and market rallied big time from there. We are again in this month of July where a low is supposed to be there, and we are rallying from here. July nahi, June, sorry. I've been saying about June 2023 since so many years. यार ये पूरा करेक्शन था साइडवेज का, और जून 23 से थोड़ा पहले मार्केट ने रैली करना शुरू कर दिया, एंड दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग टू हैपन. सो यहां पर दिस साइकिल शोज दैट डिस्पाइट ऑफ कोविड क्रैश मार्केट ने लो बनाया वही जहां बनना चाहिए था. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो होना है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है. Can I say that?
something that is supposed to happen is already being documented. We don't know how to read it. It's already there, which means a low was supposed to form on 24th of March, post-COVID crash, when everyone panicked, because it was supposed to form. Why it rallied? I have no clue, boss, but time cycle suggested it should go up, and it went up. 2008 ka crash, why it rallied? It was supposed to rally, which means June 2023, it was supposed to go up, it is going up. It is supposed to be that way. Now people will say about event, they will talk about this happened, that happened, but it is supposed to be that way. I will show you another chart. This is 43 Nifty, we already looked at it. This is ITC ka chart. ITC have been talking about since years now. If you are with me since 2 years of time, you might have heard about ITC when I talked about ITC when it was at around 200 levels also. And every 55 days, if you check, ITC just skyrocketed, including this 55. Every single 55 days, ITC simply rallied. I'm asking you a question. Don't you want to derive these levels of 55 on stock, on index by yourself? Don't you want to empower yourself? Empowerment का मतलब होता है यार खुद से करने, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है next time. You should be able to do that. That is very important, because empowerment is what I say is liberation towards financial freedom. Gold की बात करते हैं, चलिए. Gold is following a 51 day of time cycle. Every 51 day, gold is rallying. ये late हो गया था ये वाला part, but I was super bullish from all the way. And यहाँ पर gold is again forming a 51 days का cycle low, which means time to buy gold. 51 day cycle, time to buy gold. It works. Crude oil पे भी देखेंगे. उसके पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाऊंगा, जहां पर रिलायंस का ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये हमने किया था मई में. मई के अंदर व्हाट वी लुक्ड एट इज द गैन लेवल. ये जो लेवल्स देख रहे हैं ना, डब्ल्यूडी गैन के बेसिस पे ये लेवल्स डिराइव किए हुए हैं. These are gain levels that were derived basis of Reliance का चार्ट. So point क्या था, यहां पर वेव सी ऑनगोइंग है, ये वेव सी है एलियट वेव के हिसाब से, तो सी का ट्रेंड ऑनगोइंग है, लेकिन 2576 का हर्डल है. इसका मतलब अगर रिलायंस यहां से ऊपर क्लोज होता है, थोड़ा 20 पॉइंट्स का लीवे देंगे, इफ रिलायंस क्लोजेस अबाउट से 2596, which means it will head toward the next level of 2783. Look at it. This is the chart anticipated in May when we were discussing these gain levels of in time cycle trading. And look at that. And now see what happened. Reliance ने ये लेवल यहां से एक्सपेक्ट था नीचे आएगा, नीचे आया, जैसे ये लेवल ब्रेक किया, वो look at where it went and stop 2783. Now I'm telling you the future. If Reliance closes about 2820, we will, if Reliance closes about 2820, अगला पड़ाओ 2998 रिलायंस का. These are magical gain levels. ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर, ये गैन स्क्वायर ऑफ 9 के बेसिस पे है, जो हमने डिराइव किया हुआ है, और बहुत ही सिंपल साइंस है ये हमने टाइम साइकिल के साथ में डिराइव किया हुआ है. डू यू वांट टू लर्न दिस साइंस ऑफ गैन अलोंग विद टाइम साइकिल्स, कि कैसे गैन और टाइम, ये दो चीजें यहाँ पे दोस्तों देखना. ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो टाइम साइकिल है, रिलायंस का टाइम साइकिल, which means coming week में रिलायंस का टाइम साइकिल इज राइट, प्लस the gain level if 2820, price and time both together is going to give you a correct outlook. Price and time both, है ना, amazing चीज. Guys, are you understanding what I'm trying to tell you? Is it clear? Every one of you, है ना, interesting. Now let's just move forward. Okay, I said this will change your perception about market forever. लेकिन यार डीमर्जर का न्यूज तो इधर आया, बट रिलायंस वाज सपोज टू ब्रेक एंड रीच हियर. न्यूज आने दो बाद में, आईटीसी का डीमर्जर न्यूज आएगा, लेकिन उसके पहले ही रैली हो गया, which means it is discounted, which means this is already being basis of this
This is how you have to apply these cycles. This is how it works. I'll be talking about the periods of various stocks also, not here in mentorship program. I'm not going to get into the details कि ये period कैसे derive किया, क्या period है, everything. This is Reliance volume profile. Volume profile का मतलब होता है, volume profile, it indicates the area where the accumulation of Reliance happened. So Reliance के स्टॉक का accumulation start हो गया था दोस्तों, यहाँ पर 2480 लेवल के आसपास accumulation हुआ, यहाँ पर री-accumulation हुआ, और ये है सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट. तो अगर रिलायंस आपको 2650 पे अगर मिल जाए तो आग बंद करके बाय कर सकते हैं. Why? Because this is the area of 70% of the volume. This is volume profile. So what I am saying is this is what the big players are doing behind the scenes. Every single one is able to understand this big player activity. हम बोलते हैं ना यार, हमारे पास में इंफॉर्मेशन थोड़ी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ऑपरेटर क्या कर रहा है, प्रमोटर क्या कर रहा है, नहीं है. चार्ट पे दिखता है ना, लेकिन हमें ऑपरेटर प्रमोटर से क्यों पूछना है? चार्ट पे दिखेगा वॉल्यूम, वो बाय करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि नहीं. गाइस, टेल मी वन थिंग, if someone is creating big positions in Reliance, buying thousands of shares, lakhs of shares, will they not be reflected in the price action and volume? I'm asking you, will you not see it in the volume? चार्ट बोलता है बिल्कुल. Okay, है ना? Amazing. I can see here Pankaj Singh is saying, I have never seen chart market by this way. Amazing view. Mahesh is saying, sir, this is eye opening. I am thrilled. चलिए, अच्छा है. I'm making a progress here to thrill you guys and make you believe something like this exists as a science of trading. Bitcoin पे भी अप्लाई कर सकते हैं. जितेश is saying hats off to you. मजा आ गया. is जय विशाल is saying that. Okay, बिटकॉइन का टाइम सही आ रहा है दोस्तों. बेसिस ऑफ 58 डे साइकिल दैट बिटकॉइन इज फॉलोइंग. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. समय का अभाव है, नहीं तो मैं तो बहुत कुछ सिखा सकता हूं आपको. एंड प्रैक्टिकल वे विच वर्क्स इन द मार्केट इज व्हाट माय एम इज टू मेक यू अंडरस्टैंड. दिस इज कॉपर every 48 days copper is rallying. This time also copper rallied on 48 days. क्रूड ऑयल पे अगर देखेंगे, this is chart from February 2022, before Russia-Ukraine war happened. Now this chart on crude oil following 115 days of time cycle, every 115 days crude oil rallies. If you check here, the crude oil has rallied precisely. This was where Russia-Ukraine war was announced, but crude oil का time सही था. News बाद में आया. Amrendra is saying, never learned this way. Thanks. Glad to know. क्रूड ऑयल का टाइम सही था. रशिया यूक्रेन तो इवेंट हो गया. रशिया यूक्रेन के बाद हुआ क्या? क्रूड ऑयल ने तो बल्कि करेक्शन चालू कर दिया. नाउ आई एम टेलिंग यू, प्राइसेस आर अगेन ऑन दिस 115 डेज ऑफ टाइम साइकिल ऑन क्रूड ऑयल. दोस्तों, अगर क्रूड ऑयल यहां पर ऑलरेडी ये लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, क्रूड ऑयल इफ इट क्रॉसेस अबव 6350, expect a rally back in crude oil. क्रूड ऑयल रैली होगा, इंटरेस्ट रेट का क्या होगा समझ जाना. सो क्रूड ऑयल का 6350 का लेवल है. टाइम सही है. 115 डेज में, हर 115 डेज में क्रूड ऑयल रैली कर रहा है. टाइम सही है दोस्तों. गोल्ड रैली कर रहा है, क्रूड रैली कर रहा है, बिटकॉइन रैली कर रहा है, कॉपर रैली कर रहा है. तो समय तो सही है. ओके. This is Deepak Fertilizer 84 days cycle, every 84 days. This is from March 22. Look at it. Every single 84 days, this stock is rallying on the upside. If you just do an SIP in 84 days, on these 55 days on Bitcoin, on ITC, यहाँ पर मेजर ट्रेंड नीचे था तो माइनर पुल बैक आया खाली, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रैली. टीवीएस मोटर्स 100 यहाँ पर अगर आप देखो 164 डेज, एवरी 164 डेज टीवीएस का रैली तो देखो क्या साइकिल चला है ये. अमेजिंग. सो दिस इज अ साइंस. एज आई शोड यू ऑन रिलायंस, Gann लेवल इज अ साइंस. दिस इज निफ्टी. This is nifty Gann levels. I'm not getting into the details of Gann, but just look at it.
How it works, I'll tell you very quickly. यहां से रैली हुआ, ये गेन पे रुका, थोड़ा नीचे पुल बैक अपवर्ड, ये गेन पे रुका, नीचे पुल बैक अपवर्ड, ये गेन पे रुका, नीचे पुल बैक अपवर्ड, ये गेन पे रुका। अगर निफ्टी यहां से 19,600 के ऊपर बंद हो जाता है मंडे को, नेक्स्ट गेन लेवल 19,952 ओपन हो जाएगा। बेसिस ऑफ अ साइंस, टाइम इज राइट, ट्यूसडे को टाइम है यहां पर। लेकिन एक चीज का ध्यान देना दोस्तों, इफ निफ्टी ब्रेक्स एंड क्लोजेस बैक बिलो दिस 19,391, which means we will again have a correction. So you can clearly understand that 19,391 is the key for Nifty. It's very, very important for it to protect that Gann level now. अगर ये level break हो गया, तो time will then change back on the downside. It is very, very, very important that you understand this science completely. Okay, है ना clear दोस्तों? ना level मिला। Pradesh is saying, sir, thanks a lot for the webinar. Learned so much from your tweets and webinar. Improved my technical analysis skills. Able to predict market in advance. Yesterday Nifty move was predictable basis of time cycle. Wow. चलिए, why not take one day seminar, twice teach us Gann. तो चलिए, अगर आपको ये सीखना है Gann levels को, ये टेक्निक्स को अगर आपको सीखना है, I will teach this entire science of Elliott wave, time cycle, Gann levels in this mentorship program. I am asking you, are you in for this program of mentorship with me for lifetime? My mentorship is a lifetime association with you all. Are you in for that? Okay, so I'll talk about this mentorship program in a while, so just be there. But यहाँ पर अभी आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स की बात की हमने ऑलरेडी, बैंक निफ्टी की बात की ऑलरेडी हमने, क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हमने देखा। एंड दिस इज रिलायंस चार्ट, नॉट नाउ, दिस इज फ्रॉम 2017 and how Reliance has moved on the upside with Elliott wave and time cycle. Amazing. This is Nifty chart from 2015, from the year 2015. I'm telling you, I'm trading time for more than a decade now. Can you see that? I'm trading time for more than a decade, and this is from 2015, and it works like magic. The time cycle is working like magic, and so we are able to see this here. It is simply amazing. And यहाँ से जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था that the market should come down, then rally back on the upside. ऐसा हुआ क्या? देखते हैं. Exactly, it came down and rallied superb on the upside, and then it should come down again, and that's where the market after rallying came down again sharply. It works, the time works. So the things that you see here are Elliott wave and time cycle. उसके भाव और समय दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड दोनों के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव वर्कड विथ हेज फंड्स. आई नो व्हाट दे सी, व्हाट दे लुक एट, आई नो हाउ दे ट्रेड ऑप्शंस, आई नो वेयर दे क्रिएट पोजीशंस. आई कैन सी दैट ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, ये सब जगह पे हमें दिखता है वो क्या करेंगे. So it is said only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone. You need to take that responsibility. You need to take that step forward to invest into yourself and learn this science completely. I am here to take you through this wonderful journey of complete becoming, making you a trader, profitable trader is what I should say. And it works. Let us see what people have to say about this. This is Prakalarthan, and he has talked about how he bought at 9:30 candle 15 minutes time frame पे Bank Nifty का put, okay, at 65 and sold at 200 rupees, okay, and options. He has served the nation for 24 years. Amazing respect for him, and he is saying you are serving to peanut traders like me. It's a respect. That is what I am saying. It's a respect. It was for him. Socho. I have taken 300% profit basis of your analysis, Shreyansi Singh. These are all on my Twitters. This is from Amit Negi when everyone was calling for a correction. This is in June. He's talking about 19,100 level target achieved, sir. When everyone was bearish, I was super bullish.
Jagmeet Singh is saying you're simply amazing. Following you from 4 months. Fan of yours. Never trade without your weekly view. Twitter updates. Keep educating us with the knowledge. Nilesh Pawar knows me for 10 years now. He's bought call option when Bank Nifty was at 40,500 at 20, squared off at 190 rupees. This is just showing you it works. Bhavan Singh is a mentee. Uh, Over here, Nitin Dubey is saying, sir, due to your webinar, I have earned some money. Awesome. Sushant is saying, chat पे बोल रहे वो लोग, practical analysis is awesome, sir, for me as a beginner also. So Sushant, be there with me on this mentorship journey and you will be amazed. This is Bhavan Singh here from the Telegram. This is a private Telegram group which we form for mentees. And he has mentioned that, sir, just my biggest one-day profit. Your basic techniques works brilliantly. Basic technique, यार complicated नहीं है. मतलब ये easy है. And that's what he says. यहाँ पर अगर आप देखोगे, Firdaus is here right now. Also, the class apart from all the mentors or guru. No, Ajay is mentioning that on Firdaus comment on Telegram. I have never. So this mentorship was 2 years back, but I'm still helping them if they have any queries, and I still do that. And it is knowledge. So this is a private group that we form for mentees. Narvi Singh is saying that how he made that 2% on JSW still. Krishna Kishore, awesome move, Ashish. I'm going through the purchased class of cycles, time cycle course, and recommend it to the friends, and it is simply awesome. See, people are able to do that. I'm saying it's not difficult. They can do that. You can as well. Don't worry about it. I will make you a profitable trader. Okay. Pinkesh Jain, he is trading basis of after the Master of Waves class. He mentioned I developed an eye for screen reading, and using that he's scalping the market and trading. Master of Waves ke baad. Narendra Mulani, he's again a mentee, and you can see his profit. How he made that is mentioned basis of the chart, the methods that he followed, what he learned from this mentorship program. 4,90,000. He's able to make Shiv making 1,95,000 Fin Nifty option, and basis of what he learned. You can see Saurabh is mentioning here. Thanks, sir. Today total profit 1.13 lakh. Amazing learning in this Master of Cycles class. This Master of Cycle is exclusively for mentees right now. So he is sharing across how he used this time cycle concept and how it worked. Okay. यहाँ पर there is a question in Pankaj Bhala. You will teach how to work on trading view software, see candles. Yes, of course. I will be doing a complete hand holding, Pankaj. You don't have to worry at all, because these things requires mentor, and I will be there with you every single moment. Okay. राजेंद्र बिल्कुल आनंद ही आनंद रहेगा, जीवन में साथ में जुड़ेंगे. Let's see what Amnish have to say. I can't believe that things are secondary to time. The moment you tweeted about auspicious time after 310, I grabbed the moment and the result is yours. 6,86,000 on the auspicious time of 310. Look at it. Again, over here, Rashmi Dhari is also here along with you on the chat. She is there. She captured Karur Vysya Bank holding 20%. She shared it across on our mentorship Telegram group. Poonam is sharing across her 15 minutes chart of time cycle. 5 minutes chart worked beautifully. 5 minutes पे time cycle apply किया है यहाँ पे MR ने, and it worked like magic. सोचो लोग mentorship में क्या क्या कर रहे हैं, 5 मिनट पे apply कर रहे हैं. Anurag Sharma, sir, your skills to predict market is meticulous and great skills to teach a slow learner like me. You have changed the life of your fellow students. गुरुकुल का मतलब होता है सब सीखते साथ में ग्रोथ है, इसलिए हम इसे कहते हैं गुरुकुल. Sandeep, if you want to learn from me, then you should be a part of this mentorship journey and you will be amazed. Okay, Nitesh Pathak, both sides trade rock, make 6-digit profit, and on natural gas, he's trading commodities. They are becoming fearless trader over here. Again, boss, you are really unbelievable, man. Great god of chart is what he says. What a confidence, fully fearless trade.
Happy I'm joining your family, mentorship family. Over here, the reason I'm showing you this is to make you understand it works. I knew Ashish Kyal was a fantastic technical analyst. I didn't know he's an astrologer and a numerologist. What a prediction 3 days before 12 to 1 p.m. is auspicious. And Kautilya Singh is saying, overwhelming session in true words, mentorship under your guidance has definitely developed conviction with discipline. That is the most important thing. And meaningful ones, MOC is master of cycles with mentorship. Anand is mentioning about, just wanted to share across my first day to hit century in intraday. 100,000 is 1 lakh. I would like to offer my sincere gratitude and respect for your training and support. Suresh Karunanithi, he has an eye for small cap stocks like anything, and also options. The way he trades is simply superb, and he has been rocking in our mentorship groups. That's what I'm sharing here. So the mentorship is starting, friends, in July, which is 27th of July. You can be a part of this mentorship program. You can learn this science in a very systematic fashion, complete hand holding, step by step, how to look at markets and how to derive time, how to trade time, all of those things. So ye kya hai? Let me just explain it to you in a much more detail here. These 3 months of mentorship, what will it do? We will be starting together from 27th of July, and we will have together 3 hours of mentorship session, which will happen for every week for 3 months. Okay, these mentorship sessions will have 3 times in a month. So not to confuse you, for 3 months, the mentorship sessions will be there for 3 hours each session. If you are registering today for the mentorship program, you will get access to Master of Technical Analysis video. This is for people who are beginners, want to know the correct way of application of Bollinger Bands and indicators and candlestick. वो video आज आपको दिया जाएगा 12 hours का. Plus, we will be also giving you Master of Cycles का 12 hours video, which is a complete science on time cycle, along with Gann, जो मैंने आपको बताया. इसके साथ में plus there is a follow up session in coming week for Master of Cycles participant, जो होने वाला है आने वाले Wednesday को. So ये follow up session जो होने वाला है, you will be a part of this follow up session if you are registering today for this Master of Cycles program. Plus, if you are registering today, I'm going to give you a strategy course which is on Bollinger Bands plus KST का कोर्स का एक्सेस मैं आपको दूंगा for trading options on Nifty and Bank Nifty. If you are an options trader or want to increase accuracy by buying options, ये course is a paid course on my app, which I'm going to give it free for you today, right now, as soon as you are registering for this program, Bollinger Bands plus KST. Plus, इसके साथ में there will be live sessions which is going to happen, which is of option trading using technical analysis. So अगर आप mentorship के part हो, you don't have to register separately for OTTA, because OTTA plus Master of Waves will be a part of this live program which is going to happen here together. So you don't really have to worry about it. It will be together. We are going to do that in this live trading program. Are you with me? And इसके साथ में, to make it very convenient for everyone to clarify their doubts, learn about this technique and every single thing, what I am going to do is I am going to add you into a private Telegram group today itself. So मैं आपको आज ही private Telegram group में add करूंगा. Which private Telegram group? This group of Telegram will give you a complete access to me, and this private Telegram group will be there for lifetime. Plus, you will be getting 20 bonus videos today. मतलब आप सोचो जो हम ये करने वाले हैं mentorship में, what all things you are getting now. साथ में हम क्या करेंगे? We'll be looking at this very clear understanding of, starting from here, we are then going to look at very clearly how to select stocks. तो हम साथ में जब लाइव सेशन होगा हमारा, लाइव ट्रेडिंग होगा, मेंटरशिप का लाइव ट्रेडिंग भी होगा हमारा. ओके, लाइव ट्रेडिंग होगा, एंड इन दिस लाइव ट्रेडिंग वी विल बी लुकिंग एट
very clearly how to trade these techniques together. साथ में हम स्टॉक सिलेक्शन एल्गो क्रिएट करेंगे, जो मैं सीएनबीसी और आगे जीतने के लिए कैसे मैंने आई वॉन्ट सो मेनी शोज, हाउ डू आई सिलेक्ट दो स्टॉक्स, दिस स्टॉक सिलेक्शन एल्गोज आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू, विच इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर लाइफ टाइम. तो आपको स्टॉक सिलेक्शन में डर नहीं लगेगा, कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है वो सारी चीजें हम करेंगे. सो इट्स एन अमेजिंग journey I'm telling you across. So if you want these bonus videos of 20 bonus videos for lifetime, if you want this Bollinger Band plus KST breakout technique for option buyers on index, okay, if you want the access to master of cycle, which is exclusively for mentees, if you want the access to master of technical analysis, you have to register today, because these bonus videos and these accesses are given only to people who are here with me and giving your time to me. Because you are giving your time to me, I am opening up these things and tools for you. Okay, now how do you, if you only want to learn about option trading, option trading में हम क्या करेंगे, 19-20 अगस्त को है, we are going to ensure you will learn about volume profile. Okay, वॉल्यूम प्रोफाइल देखेंगे कि कैसे बिग प्लेयर्स कर क्या रहे, जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल बताया. ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल देखेंगे हम कि वो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे हम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें. आई विल गिव यू 5 ट्रेड सेटअप्स, क्लियर 5 ट्रेड सेटअप फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग. ओके, also if you are someone who is going to a job, don't have much time, how to generate that passive source of income by trading options, I will explain that. I'll explain payoff charts with strategies. All of those things I'm going to do that in this setup. मूविंग एवरेज को कैसे यूज करके ऑप्शंस पे ट्रेड निकालना है, डायरेक्टली ऑप्शंस पे स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी विल डू इट इन ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस. इचिमोको क्लाउड, वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, पे ऑफ चार्ट, ऑप्शंस का मास्टरी क्लास. दिस इज ऑप्शंस मास्टर क्लास. इफ यू आर अ मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ये इवेंट फ्री है, आपको पे नहीं करना है सेपरेटली. मास्टर ऑफ वेव्स इज अबाउट एलियट वेव, नियो वेव, एंड यहां पर हम हर्स्ट टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर्स्ट टाइम साइकिल का. अलॉन्ग विद दैट वी विल डिराइव ट्रेड सेटअप्स यूजिंग इचिमोको क्लाउड. और हम साथ में डिराइव करेंगे आज से 6 महीने बाद क्या होगा, 1 ईयर बाद क्या होगा, 5 इयर्स बाद क्या होगा. We will forecast this together in the future. This is master of waves for people who wants to forecast the future. आज से जैसे मैंने 8 साल बाद बताया था सेंसेक्स 61,000 जाएगा, 2027 का टारगेट मेरे पास रेडी है निफ्टी का ऑलरेडी, कहां जाएगा, क्यों जाएगा, वो चीज करेंगे. दिस कंबाइंड मास्टर ऑफ वेव्स एंड ओटा वी कॉल इट एज BMW, बिकम मार्केट विजार्ड. BMW चाहिए ना यार सबको, बट उसके लिए आपको एक मेथड होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए. बोलते हैं ना एक गुरु होता है तो बात अलग ही होती है, बिकॉज आई हैव सीन इट हाउ इट वर्क्स. So BMW is a combination of all of those things together. If you are registering for the BMW, you will get access to 10 bonus videos today. 10 bonus videos मिलेगा, plus you will also get access to 1 month of research report, निफ्टी का research report वो मिलेगा. Plus you will get access to Elliott wave video recordings today itself. लेकिन अगर आप मेंटरशिप के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आपको ये सब तो मिलना ही है, साथ में मेरे साथ लाइफ टाइम एसोसिएशन वेयर आई विल हैंड होल्ड एवरी सिंगल वन ऑफ यू. नाउ व्हाट इज द फीस, मेनी आर आस्किंग. द फीस फॉर मेंटरशिप इफ यू आर रजिस्टरिंग टुडे, बिकॉज अर्ली बर्ड खत्म हो चुका है दोस्तों, आप मेरा अपना टाइम मुझे दे रहे हो, तो फीस इज 1,20,000. पोस्ट दैट इट इज 2,80,000 इफ यू आर रजिस्टरिंग नॉट टुडे. Plus the excess of bonus videos you will get only if you are registering for the mentorship program today, and 120 plus taxes of course. So lifetime networking होगा, because आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कोई, someone is joining from Singapore, someone is joining as a trader, someone is joining as a teacher, someone is a fresher, someone has a 20 years of experience. Everyone is together and we learn from every single one. We also have a senior mentee who is going to join and guide along with me, so that the learning happens later also, even after 3 months. लोग बोलते हैं ना 3 महीने में नहीं सीखा तो क्या, ये 3 महीने का मेंटरशिप है. After 3 months also
you will be able to have access to exclusive webinars which I am going to conduct, जो खाली mentees के लिए होगा. जैसे आने वाले वीक में एक exclusive session हम कर रहे हैं which is going to happen on Wednesday, which is for mentees. So follow up session है master of cycles का, तो every single mentee who has been with me is allowed for that session. So this hand holding will continue even after 3 months. And you don't require any prior knowledge, you don't require any software which is paid. I will explain you step by step how to use what you have. People ask me what is the minimum capital that I need. I would say you need at least 1 lakh rupees as a capital, because if you want to trade meaningful stock selection, जब हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना, साथ में ऑप्शंस में ट्रेड लेंगे, कैसे लेंगे ऑप्शंस, बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे लेंगे. वी ट्रेडेड लाइव for the last mentorship batch, and I remember every single live trading we did, I think 4 live trading sessions, 3 to 4, and every single worked. Not a single stop loss happened in those 3 to 4 live trading sessions. There are mentees here who can vouch for that, which we derived together. हमने साथ में लिया था, ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, we did it together. So I am now going to take a very quick poll. I want to know, don't you want to be a part of something such phenomenal with me? I'm opening up this poll for you. You can register for this webinar, and you will be thrilled. So this is not an investment. This is not a movie ticket, right? Ki dekha aur bhul gaye. No, this is an investment in knowledge for lifelong association. If you are someone who is looking to increase your trading accuracy from where you are to how you can go about it and apply these concepts of time cycle, wave theory, and ये complicated नहीं है, because मैं बहुत simple way में आपको बताऊंगा, and you will be able to do that. That is my commitment to you. Okay, Umesh, you can drop your number for this mentorship program. My team will help you out with the registration. Just drop your number, they will call and help you out. So you can be a part of this. अगर लग रहा है mentorship नहीं करना है, you just want to do a 2 days of option trading, you can do that. अगर option trading में आप कर रहे हो, you will have a pre-session video of option trading. There will be a follow-up session also, and we will create in those 2 days of options how to go about it. Similarly, if you want to learn, and यहाँ पे volume profile, as I said, big players activity we are going to see. We are going to also look at the KST Bollinger Bands का combination, how to trade option trading. लेकिन अगर आप mentorship के लिए register कर रहे हो, I am going to give you this Bollinger Band KST का setup as a complimentary today itself, so that आप Monday से ही इस टेक्निक को अप्लाई करना शुरू करो. You can apply. That's a strategic video which I'm going to give you right now today. Plus Master of Cycle, जिसके अंदर गैन को एक्सप्लेन किया हुआ है, रिलायंस का गैन कैसे लिया था, निफ्टी के गैन लेवल्स क्या है, कैसे उसे यूज करना है, along with complete understanding of Hurst time cycles. वो भी वीडियो आज ही मिल जाएगा आपको. Plus as I said, 20 bonus videos जो आज मिल जाएगा, plus Master of Technical Analysis. तो अगर आप देखोगे ना, this individual courses itself is worth 22,000, and this courses combination, अगर आप देखोगे सब courses का, that itself is worth 1,20,000. तो mentorship तो essentially free हो गया आपका. Okay, so don't worry at all. And option trading का ये जो प्राइस है, मास्टर ऑफ वेव्स का ये प्राइस है, you will not even find it on my website. 19,500 is only for today. And आज register करो, I'll give you 3 bonus videos for this. Plus you are also going to be having the pre-session and the post-session. मास्टर ऑफ वेव्स में I'll give you access to the Elliott way video. तो यहाँ मैंने वो तो आपको by default मिलेगा, plus 3 bonus videos. लेकिन अगर आपको दोनों चीज करना है साथ में, BMW, you'll get 10 bonus videos, plus you get Elliott way video links today, and साथ में live sessions जब हमारा होगा. So up to you which path you want to select for this journey on mentorship or using any of these tools. But I would say you need to have these access, because you need to learn the science completely and totally. Take that step forward. You can register from the link which is shared across. I'll again reshare the link, and it is simply amazing. I'll show you how you can be a part of this wonderful journey.
This is the page. You can go and register for yourself. You will get access to all of those things that I have committed right now, and at the early bird price, which is no longer valid if you don't do it today itself. And नीचे BMW है, OTT है, and you can be a part of this wonderful program. As I said, the strategy course, 20 bonus videos, Master of Cycles access, MOTA, all will be given within 10 minutes of your registration. That is my commitment to you. Okay, I'll inform my team. They might not even know that I'm committing this to all of you, and I'll tell them to give these accesses to you. Any questions, please? So I'm open for questions. And okay, Srinivas has dropped his number, so my team will call you up, Srinivas, and they will inform, they'll help you out with the registration. Suresh Peswani, you are a part of BMW. Fantastic. Suresh and wants to join mentorship. Sure, Suresh. Just drop your number. My team will call you up and help you with the registration. Imran, the fees for mentorship I have already shared across. You can see it on the screen. It's fantastic, Suresh, to get you on board for this one. And my book, see, book contains the clippings of these things. तो एक होता है कि आप मेडिकल स्टडी करते हो बुक पढ़ के, और एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर से. सो डेफिनेटली बुक पढ़ के किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी बिफोर यू कैन अप्लाई. दैट्स सो रिस्क मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीजें हम करेंगे मेंटरशिप में स्टेप बाय स्टेप. ओके, Krishnendu Ghosh has paid for mentorship. Awesome, Krishnendu. It's fantastic to get you on board for this mentorship program. And guys, one more thing, we take limited people for this mentorship program because we don't want, I want to handhold each one of you. So if we go full, then you might have to wait for another 5-6 months unless the mentorships happen. Is it clear, every one of you? Okay, now, okay, I can see Nitesh Shah is also getting onboarded for this mentorship program. Nitesh, fantastic, great to get you on board. Gani Bhasha is saying, sir, I am new, which course to need indicator course? So अगर आपको गनी इंडिकेटर कोर्स करना है तो यू कैन सिलेक्ट BMW, जिसमें वेव थियरी भी होगा, या खाली इंडिकेटर करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स आप ले सकते हो. लेकिन आई वुड सजेस्ट मेंटरशिप इफ यू वांट टू लर्न एंड टू एंड, मतलब एज अ ट्रेडर. देन आपका कमिटमेंट नहीं है, वो मेरा कमिटमेंट है टू मेक यू अ ट्रेडर. दैट इज देन माय कमिटमेंट, नॉट योर्स. ओके, गनी, does it answer your question? Then these are all online courses. There is no offline course, Amit. और online में बेस्ट पार्ट क्या है, ये जो सेशन होगा ना, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी होगी जो आपको दी जाएगी, so that you can go through those recordings over the period of 3 months, so that you don't really have to worry. तो कभी कोई सेशन मिस भी हो जाता है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स आर गिवन टू एवरी वन ऑफ यू ओवर द पीरियड ऑफ 3 months of time. So for mentees it's okay. The reason we say कि 7 days देते, but we want you to move forward. नहीं तो होता कि जब तक एग्जाम नहीं आती हम पढ़ाई नहीं करते. But for mentees, as I said, you will have the access to whatever we are doing over the period of 3 months. So don't worry on that. These courses of OTT and MOW will be on weekend, yes, and mentorship session will happen on weekday live trading morning में जब market होगा. In case you are not able to attend, recordings देख सकते हो. And the other sessions of mentorship will happen evening 7 to 10, so that you can really do that. Okay, I'm going to be all the above courses and bonus videos inclusive in mentorship program. Yes, Bhavinaram. Bhavani Ram, it is included. You don't have to worry at all, because then I have to ensure every single one of you have the access. So Indira, the access will be over the period of the mentorship. Rupesha is saying, sir, it was eye-opening, really helpful session. Thank you so much. Awesome, Rupesh. It's glad to know it is an eye-opening session. Okay, I can see here Mr. Pathak has also got on board for this mentorship program. Awesome. Pathak, great to get you onboarded for this mentorship program. You will get access to these bonus videos.
So over here there are many chats which is coming up. I'm just looking at it. Rashmi, yes, my colleague will share across the link with you for paying for the mentorship programs. They will share across the link. You can definitely pay on that link and let me know once you do that. Uh, Let me just inform them, and so that I know you are onboarded, and then I can ask the team to set you up. Okay, Pankaj is saying I'm joined mentorship program. Awesome, Pankaj. Glad to know. And you are a slow learner. Does not matter. You don't really have to worry about anything. I'm just a telegram away. If you are a mentee, don't worry. It is my responsibility and commitment. So don't worry at all. Okay, and the Rashmi, the pricing is 120 plus taxes. So there is 18% GST, which is applicable, right? That is the thing. Okay, and Aman is okay. Aman, fantastic to get you onboarded for BMW program. BMW has OTA, MOTA. BMW has option trading program, Master of Waves program. So, Pankaj, yes, the that's the fees. You can register it on the link which is shared across. BMW में MOC नहीं है अमन. Master of Cycles is purely for mentees only. So if you are a part of mentee, it is purely for that. Suresh, yes, my team will helping you out with the registration. Oh, it's simply amazing to see so many of you getting onboarded for this mentorship program. It is simply awesome. I'm glad that the magic of time wave theory is working for each one of you. Uh, and it is something superb. ट्रेड एमओसी में ट्रेडिंग गैन स्क्वायर ऑफ 9 है. यस, उसको ट्रेडिंग व्यू पे कैसे अप्लाई करना है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है मास्टर ऑफ साइकिल्स में पीयूष. सो if you are registering for mentorship, you will get access to MOC, which will show you how to apply that Gann square of 9 on trading view also. So don't worry, वो साथ में किया है हमने. So we have done that together. वो वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन है. So you will also have the follow-up session. So again, I am repeating, guys, the follow-up session, which is happening on Wednesday, is open for every single mentee who are here from the past or who is registering today also. That follow-up session will be yours. Plus you will get access to Bollinger Band plus KST का एक कोर्स है जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, आज अगर आप रजिस्टर करें. Awesome, guys. Then so many of you are onboarded, and pardon me अगर मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाया because lot of questions have popped up here, so I might not be able to answer everyone. And just get learning going and create that passive source of income, because I know when I lost my job how difficult it was, and I am doing it. It's working for me, so I am sure it will work for you also. This is the QR code. Quickly you can scan the QR code just in case link click नहीं हो पा रहा है आपका. So you can just simply click the QR code and you can be a part of this journey of mentorship. Over here you can see Chaitanya Shukla is saying it is simply fantastic. Attending the mentorship has changed my life. My confidence has skyrocketed. Ashish sir is a guru. My salutations to him. Thank you for that. Hussein is saying eye opener, how time plays a role in price movement was alien concept to me. No one I have met even talks about relationship of price and time. All in all, it's a super learning. Thanks Hussein for that. Savendra Banerjee, the entire mentorship program was done in an excellent way. Complete transformation. That's what people say. It's a transformation, life transforming journey. And it works. दोस्तों resort है मेरा. So you know, I'm saying it works. You just need to have the time, and you get all of these things. I've already talked about it. 36 hours of live training sessions. You will have bonus videos. You will have recordings. Step by step hoga. So don't worry. If you are someone who is a housewife starting your learning, you can be a part of it. If you are someone who is already trading for 20 years,
एंड लुकिंग फॉर मेंटर, यार होता है ना कभी कभी मैं जस्ट उधर हूं लेकिन 1 घंटा पहले ले लिया होता तो यार पैसा बन जाता, या स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर होके रिवर्स हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट है। सो ये सब जो एंजाइटी है ये सब कैसे खत्म करें? आई विल टेल यू, डोंट हैव टू वरी एट ऑल, we will make it happen together, and the private telegram group will be there for lifetime where all the other mentees also are there. This is a quick disclaimer, guys. We are SEBI registered research analyst. Whatever we have talked today is purely from learning educational perspective. I'm not asking you to buy sell anything, and keep this in mind. A very quick disclosure is shown here. Our contact number is 9920422202. People on YouTube, are you still there out there? So ensure you are a part of this wonderful program and journey with me, and you will be amazed to see how brilliantly this works. So just ensure you are with me, and you will be amazed with the entire way in which we are going to drive this mentorship program. And also ensure to subscribe to the channel, share it across, like it across, do that. And here is the link towards financial freedom. So everyone who is looking to generate that additional source of income, I want you to deal with your problems by becoming rich. Okay, a classic saying over here. And Rashmi Chauhan has registered for this mentorship program. Fantastic, Rashmi. Glad to get you on board also. And there are few people who are asking for an EMI option for this mentorship program. In case so, I'm asking my colleague to share across a link where there is a possibility for them to even pay using an EMI. So you can do that on the link which I'm going to share across now. So you can just simply register for the EMI option also. Yes, so here are both the links. You can register for that, and there is an option where you can select an EMI option. So don't worry at all. You can do that from the link which is shared across. Become a wonderful trader. So that's amazing, guys. And you can also reach out to us on these contact numbers. Do ensure to follow me on Twitter, YouTube, subscribe it, and it's going to be amazing. And the venue and time of Chennai seminar is happening today at IIM. So there is no, it's not allowed. It's for the executives of IIMs where I'm speaking today. So don't worry on that. Okay, Milton wants to get onboarded for the BMW program. Sure, Milton, my colleague will share the link where you can register for the BMW program also. Rashmi, this is going to change you, is what my commitment is. You don't have to worry at all. It's going to be simply fabulous, Rashmi. So I'm glad to get you onboarded on time. You will get access to everything that we talked about, and you will get an amazing journey with me for lifetime. Now I'm with you for lifetime, तो फिर डर का आएगा, साथ में करेंगे. Seema Khan, how are you doing? She is my mentee and a one who has not missed any of the programs or webinars. Seema, how are you doing? It's good to see you. I just get energized when I see my mentees here. Sure, Ajay Baheti, you can use the link which my colleague has shared across, and you can register for that. Drop your number in case you have any issues. Okay, you can do that. Awesome, guys. Then thank you very much for joining me here. It is simply wonderful to get on board. And Shweta, please ensure to check that we are taking limited seats, and the people who are joining in. So just ensure that the access is given to every one of them. So just ensure that we don't go houseful because there are many who are getting onboarded. Have a wonderful time. Become a wonderful trader. Ashish Kyal signing off. I have given my best to you today in 2 hours, transforming you as a trader here from Chennai, live from Chennai. That shows my commitment even if I'm traveling. And see you for the session on Wednesday, which is exclusively for the mentees only who are going to be there. So your learning starts live from Wednesday. Thanks, and have a wonderful time. Have a wonderful day and become a wonderful trader.